Assalamu alaikum. Welcome to all of you at Symposium on Women Reproductive Health and Fertility with the Advancement in Assisted Reproductive Technologies. Before moving forward, I would like to start our day with the name of Almighty Allah. And for the recitation of Holy Quran, I would like to call Mr. Ahmed Zia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Jazakallah, Mr. Ahmed. Now, first of all, I would like to pay special thanks to our chief guest, Professor Dr. Fariha Farooq. She is a well-known gynecologist and working as a professor of Obs and Gyne Department at Akhtar Saeed Medical and Dental College. And to our CEO, Dr. Syed Sajjad Hussain. Thank you, sir. Dear all, before starting our formal lectures by our speakers, let me give you a brief introduction about our center and journey of ACIMC since 1998. Here are some key facts about ACIMC. We have 25 years of experience in IVF services and still growing. We are Pakistan's largest IVF branching network, and we are responsible for first FET baby of Pakistan. We have world-class IVF labs delivering consistently high success rates. We have complete IVF treatment under one roof. We are independently quality assured by Australian scientists on regular basis. We have trained the highest number of gynecologists in IVF techniques and technologies in Pakistan. We have highest number of internationally trained embryologists. The emergence of assisted reproductive technology resulting in the birth of super baby Louis Brown in 1978. The impact of the first test tube baby has been so phenomenal that international community were moved with its rapid growth and benefit to infertile couples worldwide. By the year 2010, more than 6 billion babies had been born through assisted reproductive technology. It was only after 32 years of birth of super baby, the scientist who pioneered this major breakthrough, Sir Robert Edwards Brown, was awarded Nobel Prize in 2010. Here are some pictures of Ma'am Razia Sajjad and Dr. Sajjad meeting Louis Brown in November 2017. I would also like to share a special message from Louis Brown to Dr. Sajjad. She wrote, "Keep making healthy babies." So basically the ACIMC mission and challenges are to raise awareness among the patients and doctor community through media campaigns, education and CMEs, to reach new geographic locations, to help those who can't afford the treatment, and to ensure the highest ethical standard and customer service at all our clinics. Here is a picture of ACIMC branch network. We have 4 to 5 branches in Punjab and 4 to 5 in Sindh and in Islamabad as well. And we are looking forward for Peshawar and Kabul branch inshallah as well. Here is 25 years of ACIMC timeline. First, we established our branch in 1998 in Karachi. In 2000, first FET baby of Pakistan was born through treatment at ACIMC, Alhamdulillah. In 2006, we opened our branch in Hyderabad and Sakkar. In 2009, we opened our branch in Lahore. In 2010, we opened it in Quetta. In 2011, we opened our branch in Islamabad. In 2012, PGD procedure was launched in Karachi. In 2013, PGD procedure was launched in Lahore. In 2015, it was also started in Islamabad. In 2017, we started our branches in Rahimia Khan and Faisalabad. In 2018, Alhamdulillah, we celebrated our 20th anniversary. And in 2022, we opened our branch in Multan.
In 2022, we also started genetic testing. In 2023, we are looking forward to open a branch in Gujranwala as well, inshallah. So Concept Karachi was formally inaugurated by His Excellency Mr. Geoffrey C. Allen, the then Australian High Commissioner to Pakistan. Coincidentally, it was also the day that we also got our first IVF positive result, and since then there is no looking back. Here is the picture of Islamabad opening in 2011. As we have talked earlier, that we always try hard to provide quality treatment to our patients, and for that purpose, we have arranged a grand symposium in Lahore in 2018. We are Pakistan's first IVF clinic to have time-lapse incubators, and also first to have mini incubators, which are optimized for clinical and IVF procedures and designed to support existing quality assurance routines. This value-added treatment combines unique incubation environment with secure and safe procedures. And the great thing is that at Australian Concept, we do not charge any extra to our patient for this value-added service. Australian Concept Karachi, Lahore, and Islamabad are the first IVF clinics to offer this technology in Pakistan. And for assurance of quality, as IVF consultant, Adrian Pope regularly visits our IVF lab for improvement and upgradation of our lab protocols. As we have talked earlier, that one of our aim is to help patients who can't afford the treatment. So for this purpose, Angel Trust was formed in 2006. It is dedicated to help non-affording infertile couples. It is registered with the government of Pakistan, and this trust helps non-affording couples by providing them financial assistance. Since 2006, hundreds of couples have been benefited from Angel Trust and realized their dream of a healthy baby. Chairperson of Angel Trust is Mrs. Razia Sajjad. She has a very beautiful message. Life always has something to offer to everyone, even to the infertile couples. We just have to find a way. When the child is born, the doors of happiness are open for the parents. Nothing brings more joy to a family than the birth of a child, indeed. We have also launched our Ramzan package for this year, 2023, for couples who can't afford the treatment. So if you want to refer patients to our center, they can initially book some amount and avail Ramzan package for discount. The future of IVF is genetics. Until the advent of genetic testing, the assisted reproductive technology procedures had limited success rate. Advanced reproductive genetic testing is the answer to previously unknown IVF, ICSI procedure failure reasons. For example, implantation failure. Genetic testing during different stages of reproductive cycle. In pre-conception, we offer CGT procedure. In pre-implantation, we offer PGS procedure, SAT, PGT procedure, and ERA procedure. Prenatal, we offer NACE procedure and POC procedure. Neonatal, we offer WES procedure. For further information about these procedures, you can visit our doctor or consultant. Here are some pictures of beautiful babies born through treatment at ACIMC. Thank you so much. Now let's move towards our first speaker, Dr. Safia Sultana, who is Professor of Gynae Department at Shalimar Hospital and working with us as an IVF specialist. Please welcome Dr. Safia Sultana. The
idea of today's symposium is to talk about the women reproductive health, and a little bit we will also touch the IVF frozen cycles and the use of the retros, that is the various aspects of its use for increasing the fertility and what is its role in life. So now it is known as a wonder drug, that is letrozole is a wonder drug that it can be used in so many applications. We know that you can see in this that is ovulated dispersion is the largest operation of the female infertility. That is, I think I understand. With a move of it, that it constitutes about the 35% of causes. That is, there is ovulated dispersion. Other causes, that is the triple factor that amounts to 30%, male factor is also about 30%, and the other factor that is uterine factor, endometriosis, and the that also constitute. And then the recently we have come across that is young women, they are coming with decreased ovarian reserve. That is their AMH is less than one, and there is a number of the follicular follicle count is reducing. We don't know what are these environmental factors, dietary factors, but over here we are seeing so many women with decreased ovarian reserve. So, as I already said, that anovulation constitutes a major portion of the female fertility. And the management of the ovulated dysfunction is the ability to reduce the ovulation. That is a big that challenge that we have tackled it. And the commonest cause of the anovulation is the polycystic ovary disease. You already know, being doctors, that there are three types of the anovulation. Group one is a hypothalamic hypopituitary. Group two, that comes when there is a hypothalamic dysfunction. That is the polycystic ovarian or other causes of anovulation. That is type two. That is hyperprolactinemia. Type three is when there is ovarian failure. That they do not have any follicles, any eggs. They only conceive with the ovulation. So, what is the goal? What we want to achieve when we introduce the woman with the drugs for the ovulation reduction? Our goal is that is we want monofollicular development so that there are no chances of multiple pregnancies, and there are also we know the mobility and mortality of the multiple pregnancy, and there should be least invasive and the simplest treatment option, and maximize the rate of the singleton pregnancy, minimize the rate of the ovarian hyperstimulation. So in the first line treatment that 55 years ago that clomiphene citrate it came in the market, and that resulted sold lot of number of pregnancies in the whole world, and pregnancy rate with this is 10 to 20%, and the ovulation rate is about 60 to 85%. But it is effective, but it is also associated with many drawbacks. So we know what it causes. It depletes the receptors, estrogen receptors in the hypothalamus and the pituitary. So the negative feedback mechanism is interrupted. So hypothalamus increases the release of gonadotropin hormone that results in the follicle stimulating hormone from the pituitary, and that FSH induces the follicle. But really the follicles, they are multiple. What are the drawbacks of it? That it has anti-estrogenic effect. That is on the endometrium as well as on the cervical. The endometrium never grows more than 6 millimeter, and there is also thickening of the cervical mucus because there is reduction in the glandular density as well as there is a decreased blood flow to the endometrium in the luteal phase. And there is a, as already said, the change in the quantity as well as the quality of the mucus. Miscarriage rate with this clomiphene citrate is the 26%. So these are because it has a prolonged action, it accumulates in the body. So this anti-estrogenic effect, it continues for the many days, and the woman may have the symptoms of the hypoestrogenism. That is hot flashes, another parameter. So in 1990, there were the two scientists or the physicians that is in the Toronto General Hospital. They thought, what is the alternative to the chloroquine citrate so that these side effects which we see they can be overcome. And they made attempts to synthesize orally active 4-hydroxyandrosterone. But this did not work, and they had to abandon it. So a decade passed. Then they learned about that there is a drug, Femara Natrozole, that is a potent aromatase inhibitor, and that Novartis is making it, and it is used in a metastatic breast cancer as an anti-estrogen,
Then they conducted a final study and they initiated the test with the ribosome for ovulation duration and they compared with the CC and this study was first time published in the 2000. So it is not that very old drug, it is a research drug. Since then, multiple studies, randomized controlled trials, they have been published, and there were multiple original articles, and it was found that the women who had a failure or resistance to the chronic concentrate, lactozone is very effective in both in ovulation as well as the life period. So who does it tax? Lactozone is aromatase inhibitor and it enables the cytochrome 450 that is aromatase enzyme. So it is an aromatase inhibitor and where it acts in the granular cell in the ovary, there is the androstenedione and the testosterone. Aromatase inhibitor doesn't allow the testosterone to convert into as estradiol and androstenedione to testosterone. So at the ovarian level, there is a decrease in the estrogen level. But the natural hypothalamic pituitary axis is intact. And there's a final step in the estrogen biosynthesis pathway that results in decreased level of the circulating estrogen. And previously they synthesized steroidal irreversible, but now they are the drugs which we have, it is a non-steroidal, it has a reversible action. And it is a third generation aromatic inhibitor. So what are its advantage that it is absorbed quickly within an hour. Bioavailability is 99%. It is the absorption is not affected even if you take with the food and electric metabolism is created by the kidneys and elimination is in 2 days. That is half life is 2 days as compared to the chlorine concentrate that goes for weeks and days. Renal excretion iron 90% is created by the kidneys and safety it is well okay, doesn't lead to any symptoms of the hot flushes or perineal. So mechanism of action, the same that is at the ovarian level, estrogen will be synthesis, the decrease. So on the hypothalamus pituitary granulocin releases hormone is released and that results in the follicle stimulating hormone and that results in the monofollicular development. But at the same time, when the FSH level increases, the ovary starts producing the estrogen, and then it affects on the hypothalamus. So other follicles they undergo atresia, only one follicle develops because the natural mechanism of negative impact is still there. So this is the mechanism actually. So would low estrogen, high androgen level at the level of ovary that will be harmful? No. The presence of the increased follicular sensitivity to FSH results because of presence of androstenedione in the granular cell. Similarly, testosterone augments the FSH receptors in the follicle. So testosterone also augments the insulin growth factor. So this improves the presence of the increased testosterone improves the follicular genesis. At the same time, there is the natural mechanism come into action. FSH starts rising, which supports more aromatase synthesis from the granular cells. So this will limit the androgen accumulation nowadays because FSH now has come into action. There is not prolonged action, it is reversible action for the shorter period of time. The estrogen which is also produced that is not that high that results with the giving chromosome concentrate and later on we see what is that the pre-ovulatory estrogen that doesn't rise so high. So the advantages are that it doesn't deplete the estrogen receptor throughout the body. It keeps the hypothalamic pituitary axis intact. It has a short half-life that is 45 hours. So what are the protocols? How can we give lactose? Okay. One is the conventional standard protocol. You can start either from the second day or the third day, then you give it 5 days. So, and then you follow the follicle, and when it matures, that is at 18 to 20 millimeter, with lactose, follicle should reach the size of 20 millimeter. With gonadotropins, it is mature when it is about 18 millimeter. So, you wait till it reaches the 20 millimeter, then you can trigger it, and you can go with the pathway of the IUI or time changer dose. So, this is the one protocol that is standard protocol. That the dose is 2.5 milligram OD for 5 days. So this is you can start either on the second day or third day, and then you give it maximum
you can increase maximum dose is 3 tablets per day. Comparison of CC is that is it is high rate of monomolecular and no direct anti-strogenic adverse effects of the endometrium, shorter half-life and low serum. In WHO group, class 2, this is the drug. High quality evidence has been proved that letrozole is superior to the CC in ovulation rate, pregnancy rate, and childbirth rate. And in the studies that was in a medical college of obstetric gynecology, WHO guidelines, Australian National Health Medical Research, as well as the Anglo Research Society, they have proved it and they have recommended that in PCO patients, letrozole should be the first line of further ovulation. So in PCOS, as we have told, that should be the first line of for the ovulation. What about unexplained fertility? When the woman is ovulating, her tubes are all right, husband is all right. What is the advantage of this in unexplained fertility? The results are same. It achieves slightly higher ovulation rate than in the case of CC, it is the maximum rate of ovulation is about 85. But in the case of letrozole, it is 96%. And in the unexplained fertility, although it is comparable with the clomifene, but if extended protocol that we will talk about what is this standard, that is about 10 days if it is given and combined with IUIU unexplained fertility, it has been proved that it achieves high pregnancy rate and accumulated pregnancy rate, and there is an article in the Reproductive Endocrine 2000. So how it acts in unexplained fertility because it increases the endometrial receptivity. The endometrial receptivity markers that is integrin, L-selectin, and leukemia inhibitory factor they were found to be high as well as phenophyte formation in the epithelium and stroma was higher than clomifene. So it should be used in unexplained fertility. There was an article in the Village Systemic Bioreproductive and they found that an endometrial receptivity marker with the use of the lactose in unexplained fertility they are more, so the pregnancy rate are also comparable. So what is the standard lactose therapy? First, we talk about that is standard protocol, that 5 days. Now, standard is that is a recent very good article that was published. The authors were Bedami et al. They said that when you use it for 10 days, starting from the day one of the menses, and use for CC resistant PCO the women, they found that is a standard protocol. It has a higher number of the follicles, number of the M2 ovocytes, pregnancy rates, and the live birth rate, and the decrease in the miscarriage rate in the long protocol, long standard protocol. Conclusion is that is there were high number of the patients who ovulated, number of dominant follicles in the standard protocol they were lower, pregnancy rates were significantly greater, and there was no extra cost. That is, they compared it that standard protocol that they give 2 tablets 40 per 5 days. In standard protocol, they give 1 tablet from day 1 to day 10. That is, the number of the tablets is the same, but the results they were high. In IUI, usually we try to achieve at least 2 follicles, they should be there. So if we want that, instead of monofollicular, we want 2 follicles, 3 follicles, we can give standard protocol that is for the 10 days. So what is step-up protocol? Third protocol is the step-up protocol. That is, you give from the day 2, you give 2 tablets, then you increase to 3, 4, 5. Then you go on increasing the number of the days, the dose of the lactose. This is the step-up protocol. This will give where we need multifollicular development, such as in IVF, we can use it in porous waters. Or it gives high pregnancy. That is step-up doses. That is you use 1, 2, 3, and 4 tablets of the lactose with the each number of the days of stimulation. So there was an article that was asking how chemical obstetrics they found that is when the group A it was done with the step-up protocol. The lactose from day 2 or 3 of the menstrual starting with 2.5 and increased to 2 tablets, 3 tablets, 4 tablets. They compared it with lactose that the given 2 tablets daily plus narrow coffees. They found they achieved the same number of the follicles as well as the pregnancy rate. So step-up protocol is also cost effective. You don't have to use the gonadal coffees. You can achieve multi-follicular development. So
There is another protocol, step-up cyclical protocol. This has been recently published in the fertility strategy, and there was a large study that was carried out in China. That is, they started with a one tablet, 2.5 milligram, and if the ovulation rate was less, they next cycle they did two and then three, maximum three tablets, and they found that with the three tablets, the ovulation rate increases to 85 to 18%, pregnancy rate also 16%, 60% as compared to the one tablet. So you can follow, you can increase the number of the ovulation rate with the increase in the number without any side effect. So there is another modified extended lateral which is not yet published, but it is also very critical that you start with a tablet, either two tablets or one tablet. Okay, you go on giving on the day 6 you perform an ultrasound. You see that the follicle is less than 10. You continue to give the dose. Then again you perform on 9 day, and you see that follicle still 15, 16. You can continue till 12. Still till you achieve the size of the follicle about 20 millimeters. So you can continue, you can extend that. So there is another pathway that is simultaneous clomiphene citrate and the letrozole therapy. Recently, I read an article that is in IVF. They are giving this that continued clomiphene and the letrozole, and they were getting better number of the follicles. So as compared to the granulopathies, it is cost effective. The patients will come to the poor responders also is very helpful, and the non-reporting patient where the granulopathy cost is expensive, we can use that. So letrozole clomiphene, the randomized control trial they performed, and they found that it is increases the number of the multifollicular development and also cost effective. So the combination of letrozole CC is associated higher ovulation rate compared with letrozole alone in the women with infertility and PCOS. What are the other uses? This was for the ovulation. There are other uses as well. That adding letrozole extended dose with granulopathies in the co-responders, we can get multiple. So again, I said that in the poor responders, we give 6 daily injections or 7 daily injections, still they do not respond. Instead of that, they show the response when we add letrozole with the low dose granulopathies. So there was an article that was published in Journal of Ovarian Research, and that showed that adding the poor responders to the granulopathies with letrozole, you can get higher number of follicles as well as M2 sites. Fertilization rate was also high, and 2P and MPOs and top quality MPOs they were significantly high. So this was a conclusion. So in suboptimal responders, where they have the low variance, low enterofollicular, and the FSH is also slightly higher, that is 11 to 15 millimeter. This is the answer to reduce the cost of the HMG and to give the higher doses of the graph. So, what is the role of letrozole in prevention of ovarian hyperstimulation? They found that this, when you give the markers of the ovarian hyperstimulation, that is vasoactive epithelioid growth factors and the pigment epithelial derived factors, they in the ovary they have anti-angiogenic effect, that is letrozole, that has anti-angiogenic, anti-inflammatory activities. It decreases the OSS. So the PCO patient, they should be given when you are preparing them for the IVF. It decreases the chances of the ovarian hyperstimulation because those patients, they are at risk of that. So this is an article that also proves that ovarian hyperstimulation can be prevented in the patient with PCOS when you combine the stimulation, that is controlled variable stimulation, with letrozole as well as low dose granulopathies. So this is the study they have showed it. So what about FET cycles? FET cycles we have either natural cycle, either we give HRT or either we give ovulation reduction. And when letrozole is used, it is cheaper, patient friendly, and it yields equal results as natural or artificial required. And it requires less uterus support because there will be opposite and opposite will be secreting progesterone. So in an ovulating patient, it is a better choice in preparing the embryo for the ET embryo transfer. So potential role of the aromatase inhibitor in the treatment of the endometriosis. Endometriosis, when it is present, the endometriosis also has aromatase receptors.
So when you give it, the endometriosis which is present in the ovary or in the mitochondrium, this suppresses because estrogen will be decreased, so it suppresses. The people have treated it with endometriosis. We know it is estrogen dependent. It is a chronic inflammatory disease. It affects about 5 to 50% of the women with the infertile, who are infertile. And that is cytochrome P450 is the component of aromatase, and it is a key enzyme, and this will be suppressed by the use of the aromatase inhibitor. So there was a study that they used letrozole 2.5 milligram for 2 months, and they compared with the other patients who were given that is long acting the gonadotropin releasing hormone, that is the tryptophan, and they found that is the rate of the disease decreases, disease is suppressed, and they were comparable results. So look at the cost of that and compare with the gonadotropin releasing hormone. A single injection may cost about 5 to 12,000. So, for fertility preservation, that is patients who have early diagnosis and detection of cancer, they want to preserve their fertility. You can stimulate them with the letrozole because at the end of the stimulation, the estrogen level may not be that high that will stimulate their disease. So, fertility preservation for the young patient, cancer patient is a multi-need standard course of gene increase directly 10 times that of natural cycle into regular recurrence of the estrogen sensitive acid. And in that, letrozole combined with low dose in controlled weight stimulation significantly reduces the plasma P3 level. So in those patients, it is a very useful drug. So that high estrogen doesn't stimulate their breast disease or cancer. So in the beginning, there were some doubts that it may increase the congenital malformations. So, but they were larger studies that were performed, and they came to show that it is a safe drug. There is no difference in overall rate of the major or minor congenital malformation among newborns from mothers who conceive with leprosy drug. So it is a safe drug. So summary, better pregnancy outcome and higher life compared with the CC in PCO patient. So letrozole should be the first line drug. Effective in patient with CC resistant PCOS. Reduced gonadotropin dose and superior alternative to CCA. Combined gonadotropin cycles, monofollicular development and low vertical pregnancy. No estrogen effect on the endometrium, mitochondria, no cancellation rates, and the risk of hyperstimulation. Safety established in the clinical studies. Conclusion, it is a new type of ovulation induction drug, not only limited to ovulation, but it for other many aspects of the infertility. Experiently in the PCOS is now established. Other clinical applications, they need larger randomized control trials to reach a consensus or standard. Thank you very much. ये अभी का वो तो स्टेप अप टेक्निक है when we are increasing the letrozole day by day. तो उसमें कितना for how many days we have to increase like अगर हम 5 Day 12 तक day 2 से हम day 8 तक वो उसने 5 दिन ही दिए 5 दिन दिए ठीक है day 1 पे 1 day 2 पे 2 day 3 पे 4 ठीक है 5 वाले तक हमने कर अब 4 उस मैक्सिमम 4 अब 4 भी मेंटेन करना है चलो फॉलिकल्स हाँ लेकिन 4 मैडम आगे कितने दिन चलाएंगे 4 टैबलेट्स को कंटिन्यू करेंगे हाँ फोर रहेंगे 4 रहेंगे till the follicle reaches 20 मैडम तो हम मैक्सिमम कितने दिनों तक आगे चला सकते हैं कि वो ओवुलेशन हो जाए या हम अबंडेंट वही जो स्टैंडर्ड day 10 to day 12 day 1 पे आपका follicle reach ठीक है 4 तरह की प्रोटोकॉल है ना एक तो ये है कि सेम साइकिल में आप डोज इंक्रीज करें एक है आप कंसेक्टिव साइकिल में डोजेस को इंक्रीज करें एक ये है कि आप जो है स्टैंडर्ड 10 डेज तक ले लें एक ये है कि आप बढ़ाते जा रहे हैं आपका डे 6 पे फॉलिकल छोटा है फिर आपने डे 9 पे किया आपको लग रहा है कि अभी ये नहीं है अभी 12 है अभी नहीं हो रहा आप उसको और डोज जो है ना और स्टैंडर्ड डोज वो स्टैंडर्ड डोज सेम डोज को और दिनों तक 12 दिन तक चला अच्छा मैडम जो आपने एंड्रोजन्स का इफेक्ट बताया है जो बिल्कुल एक वो है वो एक दफा अगर आप स्लाइड दोबारा दिखा दो एंड्रोजन जो है फॉलिकल के अंदर जो बढ़ जाता है ना क्योंकि एरोमेटेज नहीं आ रहा एस्ट्रोजन नहीं आ रहा तो वो उधर रहेगा तो वो क्या करेगा वो फॉलिकल का एफएसएच को रिस्पांस बढ़ा देगा ऑगमेंट कर देगा
रिसेप्टर्स को इंक्रीज कर देगा जो कि एफएसएच को रिस्पॉन्ड करेंगे, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर को इंक्रीज कर देगा। लेकिन ये शॉर्ट इफेक्ट है, फौरन ही वो बढ़ जाता है एफएसएच, ठीक है, इधर से एस्ट्रोजन प्रोड्यूस हुई, उधर से जाके उसने जो है ना तो मैडम ये एंड्रोजन जो है वो एंडोमेट्रियल थिनिंग नहीं करती, इसमें बस because it is a short action and it is reversible action, ये जो नोट। थैंक यू। एक और क्वेश्चन है कि आपने कहा कि ये लैक्टोजोल विद क्रोमोफिन सिट्रेट, हाँ तो हम क्रोमोफिन सिट्रेट के जो इफेक्ट ऑन द एंडोमेट्रियल एक्टिविटी है उसको कम करने के लिए हम लैक्टोजोल दे देते हैं, but somehow they found that lactose that will counteract the effect of thinning of endometrial and thickening of endometrium. But India में तो अभी वो दो कर रहे हैं, 4 responders में कर रहे हैं, they continue the use of chloroquine citrate for 10 days and they give the lactose for 5 days, and they have found that is in poor responders, especially poor responders, their cost has reduced, they get multifollicular because CC also falls in multifollicular, and when we combine with जो उसके side effect है CC के, वो आपको provide Thank you. नहीं We listen that the chromosome if we are doing 150 or we are increasing from 3 to 4 doses, that is going to have the effect on the endometrium. So आप chromosome की dose वही tablets है कि 100? जो one tablet One tablet. लेट्रोसोल को बढ़ाए, क्लोमिफेन को 1 वो एक ही। वो एक ही, वो उसका बैकग्राउंड आइडिया यही है कि क्योंकि वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को भी खत्म कर देती है, वो मल्टीफॉलिकुलर डेवलपमेंट को कर रही है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ फॉलिकल, उसको जो काउंटरएक्ट करने के लिए आप साल लैक्टोजोल दे रहे ताकि उसकी एंडोमेट्रियम की एट्रोफी ना हो, उसमें ग्रोथ, ग्लैंडुलर डेंसिटी ठीक रहे, ब्लड फ्लो वहां पे ठीक है। Thank you, madam. Thank you so much, Dr. Satya, for sharing wonderful facts and information about ovulation. Our second speaker of the event is Dr. Shazia Ashraf, Associate Professor of Gynae Department at Jinnah Hospital, Lahore, and she is working as an IVF specialist with us. She is also Medical Director of Australian Concept Punjab. Please welcome Shazia Ashraf. अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को देख के बहुत खुशी हो रही है and to be really honest with you, ये शो करता है कि how much you are interested in the field of infertility and you want to know what's the new things which are coming up. So frozen embryo transfer is one of the newer things, not the newer things, but the thing which we have added in it, the pre-implantation genetic testing, has given a new paradigm shift towards the results, and we are getting really good results with frozen embryo transfers. So the things which I'm going to cover in this talk is about what are the indications, how we compare the fresh cycles with the frozen cycles. What are the results, what are the techniques, the protocols, and all your misconceptions and confusions which are associated with FAT will be inshallah cleared in this talk. And you are free to ask questions in between. मुझे बाद में याद नहीं रहता कि वो questions उधर दिमाग में जमा होते रहते हैं और बाद में याद नहीं आता. You can just intervene in between. So the objective is to know what are the benefits, why we are shifting from the fresh cycles to the frozen cycles. ऐसी क्या चीज हो गई है कि अब हम fresh में बहुत ज़्यादा prefer नहीं करते. And the second thing is वही वाली बात है कि आपके मैंने views or the doubts हैं वो clear कर. So previously what is happening, why the FAT has been increased? It has increased from 7.9% of the cycle, which is in 2004. It has increased to 40.7 in 2003. You can see how much it is on increase. और उसकी वजह क्या है वो हम आगे discuss करेंगे. And the main benefits of having the frozen embryo transfers, why the centers they are moving from the fresh to the frozen cycles. Basically, there are 3 things. What are those 3 things? Because it is more safe. अगर हम बात करें कि the patient is having ovarian hyperstimulation syndrome और उसमें अगर मैं embryo transfer करूँ, what is going to happen? It will increase the morbidity of the patient. So, keeping this in mind, that this is a safe procedure, we just stop the cycle and then we transfer in the next cycle. So all the hormones which in the body, it just vanish, it washed away.
Second thing is we are transferring one good embryo. And when we are transferring one good embryo, what is happening? It has more chances to grow instead of transferring 2 or 3 or 4 embryos at a time in a fresh cycle. That will end up in triplet pregnancy, quadruplet pregnancy, and there is more perinatal morbidity and mortality. The patient will go into preterm labor. हाथ कुछ भी नहीं आ रहा, 3 4 डाल रहे हैं, and if the patient goes into preterm labor at 20 weeks or 24 weeks, we are not getting nothing out of it. So ये सारी चीजें जब हमने देखी तो फिर हमें लगा कि फ्रोजन की तरफ जाना चाहिए. This is a better option. अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्या we are now going to weigh and balance between the fresh cycles and the frozen cycles. And in the end, I will want to have your opinion because you are the consultants who are referring the patient to our center. और patient आता है वो छूटते कहता है कि मुझे एक्सी नहीं करानी, मुझे एफटी करानी है. मुझे एक्सी नहीं करानी, मुझे एफटी करानी है. खाना बनाओगे तो फ्रीज करोगे ना. बात समझ में आ रही है? The patient first has to undergo ICSI treatment और उसमें जो embryos बनेंगे that we are going to freeze. So FET in itself is nothing. So fresh versus ये है. अब इसमें थोड़ी सी हम बात करते जाते हैं. When we are transferring in the fresh cycle, जब fresh ICSI करते हैं, the whole treatment it take almost 1 month. Starting from the day of the stimulation, 10-12 दिन लगते हैं. For the stimulation, then we do the pickup, then we do the transfer, and then 2 weeks to have the medicines at home or pregnancy test. So that will take like a month's time. But when we are doing the FET, what is going to happen? It is taking twice the time. एक cycle में हमने stimulation की, and we are not transferring in that cycle. Periods आ गए, and in the next cycle we are again preparing the endometrium. So the time is doubled. Workload is doubled on the lab. कि वो बना के फ्रीज की अगली दफा फिर लाइनिंग बनेगी, फिर सारा कुछ होगा. And believe me, some couples came to a clinic and उस आती day to day, we do not have much time. हमें इसी cycle में डलवाना है. We don't have much time. We cannot stay in Pakistan because the couples sometimes they have come from abroad. हमें इसी cycle में डालना है और अभी cycle शुरू करें होता है. So इसमें फिर हम क्या prefer करोगे? Fresh cycle. The fresh cycle. दूसरा जो implantation. Does the implantation is going to be affected with the fresh cycle? Any idea? No. The thing which is going to make the difference is this. This I will talk later on. Because if you are doing FETs without doing the genetic testing, the results are almost comparable with the fresh. अगर genetic testing नहीं कर रहे, तो अगर fresh डालते हो, frozen डालते हो, the results are almost the same. 19-20 का फर्क है, not much. जिसने फर्क डाला है, that is pre-implantation genetic testing. तो कैसे डाला है वो हम बात करते हैं. The miscarriage rate between the fresh and the frozen remains the same. The ectopic pregnancy remains the same. The live births remain the same. Preterm labor fresh में ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि अगर we are not freezing the embryos और अच्छे embryos बने और मेरे दिल चाह रहा मैं 2 डाल दूँ मैं 3 डाल दूँ तो क्या होगा? अगर तीनों चल जाते हैं तो that will end up in a preterm labor. Congenital abnormalities, दोनों की congenital abnormalities में बच्चे पैदा हो रहे हैं, does it make any difference? Fresh में और frozen में? फ्रोजन में तो टेस्टिंग हो गई ना, तो टेस्टिंग के बाद If we are doing the PGT thing, अगर कोई PGT कर रहे हैं, genetic testing करके डाल रहे हैं, yes, obviously then the congenital abnormalities no more. But if you are just delaying the transfer and putting the same embryo as if you have transferred in the fresh cycle, the results will remain the same. अगर उसमें abnormality हो सकती है with the fresh, it will also happen in the frozen. Then comes the mean birth weight. वही वाली बात है, preterm होगा, जल्दी डिलीवरी हो रही है तो birth weights कम हैं, चीजें कम हैं, तो that is the difference. तो हम जो कर रहे हैं PGTA, that is making the difference. And when there's ovarian hyperstimulation syndrome, in which we are not transferring the embryo, any of the embryo. Sometimes the patient says, हमारी responsibility पे डाल दें, please डाल दें, 8 डाल दें. तो our aim is to have a pregnancy. यही है ना कि जो हम सारी ट्रीटमेंट करें, our aim is to have
a healthy pregnancy. But if the patient is already in hyperstimulation and I have transferred one embryo or pregnancy हो जाती, what will happen? तो pregnancy के अपने hormones release होंगे and the hormones they are already in the body, they are at a very high level. So what happens? Hyperstimulation होगी, aggravate होगी, patient की morbidity बढ़ गई, hospitalization बढ़ गई. This is not our aim. So here the frozen embryo transfer is the answer. तो यहाँ पे देखिए कि ये कुछ results हैं. In 2001, this green is the fresh transfer and this blue is the frozen transfer. So 2001 में 33% जो live birth rates हमें मिले with the fresh ones is 33%, which has increased in 2006 to 36.3, almost 2.93% rise. सिर्फ इतना ही rise हुआ. But when we are comparing this blue 23.4 in 2001, it has increased to almost 46%, almost the double. तो चीजें डबल हो गई. फिर क्यों डबल हुई हैं? Genetic testing से भी डबल हुई है, and because previously we were using the technique which is called a slow freezing technique, and now the technique has been improved. We have now the fast vitrification technique. This is called the vitrification technique, that is the fast freezing techniques. तो उसमें degeneration के chances कम हो जाते हैं. जब आप thaw करते हैं, freeze करते हैं, the viability of the embryos it will remain like 95 to 97%. ठीक हो गया. तो इसलिए जैसे जैसे कोई चीज हम सीख रहे हैं तो हम सीखते जा रहे हैं, we are having the experience, तो चीजें बेहतर से बेहतर हो जाएंगी. तो यही हुआ है इधर भी FET के साथ के पहले रिजल्ट्स इतने नहीं थे, but as the people they are doing on and off FETs in the centers, तो चीजें improve हो गई, techniques they have been improved. तो अब हम indications कर रहे थे कि what are the indications for FET. तो FET की अपनी क्या indications हैं? किन patients में करेंगे? अगर आप कहते हो the results are comparable to just the PGT which is making the difference, तो फिर इसके अपने भी तो indications होंगे ना कि करें कि ना करें, कि सिर्फ PGT ही करवानी है. लेकिन अगर हस्बैंड अवेलेबल ना हो, उसने अब्रॉड जाना है, मतलब तो वो एम्ब्रियो फ्रीज किए जा सकते हैं. बिल्कुल किए जा सकते हैं. Yes, this is one of the reasons. But इसमें जो basically हम FET करते हैं, when we are transferring in the fresh cycle, तो बड़े अच्छे खूबसूरत embryos पड़े हैं. We do not want to waste them. हम क्या करते हैं? The extra, the surplus embryos, they are frozen. और वो होता ये है कि जब हम freeze करते हैं, अगर patient की pregnancy हो जाती है, तो patient have another pregnancy after 1 or 2 years, we use those frozen embryos. Or if God forbid the first attempt is not positive, नहीं हुआ, and patient wants to have the next trial, तो वो 2 महीने बाद ले सकती है, provided the embryos which we have frozen are of very good quality. Grade 2 या grade 3 के freeze नहीं करते. Are you with me? एज फैक्टर भी आ जाता है. Sorry? एज फैक्टर भी हो जाता है. Age factor is very important. कि अगर age factor उसमें है कि the age has its implication on the quality of the egg. और fertilization उस हिसाब से होगी, embryo उस हिसाब से बनेगा. जितनी younger age होगी, underlying problem नहीं होगा. We are going to get a good quality of the embryos. Grade 1. तो शादी पूछना चाहती हूँ आपने कहा कि fresh cycle fresh transfer में multiple pregnancy का ज़्यादा chance है कि आपको repeat आप ऊपर और साथ. तो हम उसको ये भी तो कर सकते हैं कि एक या 2 की ट्रांसफर बाकी है. बिल्कुल यही तो मैं कह रही हूँ कि अगर आप कंपेयर करें 1 with 1, तो फ्रोजन भी बेहतर है, फ्रेश भी बेहतर है. कि अगर आपने माइंड मेकअप करिए, because there are some centers who do not have the facility of freezing the embryos, उनका दिल होता है कि embryos बड़े अच्छे बने, ज़ाया क्यों करें? अच्छा freezing ये से तो ज़ाया क्यों करें कि 3 है, तीनों डाल दो. Because the couples they have come in और उन्होंने कहा जी हमारे 6 डाले थे, 6 भी डले हैं. कि जी उन्होंने 6 डाले थे, उन्होंने कहा था कि आपके 6 बहुत अच्छे बने हुए, तो हम देखो मेरी बात सुनो. होता क्या है कि पेशेंट का दिल चाहता है कि 2-3 महीने के टिकट डाल दो. You are waiting for like 10 to 15 years, दिल चाहता है बहुत सारे डाल दो, बहुत सारे डाल दो. लेकिन समझ नहीं आता बहुत सारे डालने का मकसद क्या है. We want to have a pregnancy which is a healthy pregnancy, और एक और नेक हो, safe हो ना पेशेंट की. अगर मैं 5 डाल दूं और 5 चल जाए तो क्या होगा? टर्म तक तब तक नहीं पहुंचेंगे. तो
प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। Problems are- अगर मैं फ्रेश में भी एक ही डाल रही हूँ and I'm freezing the rest of the embryos, तो the things are comparable with the frozen. ठीक हो गई बात? अच्छा, और इंडिकेशंस के हैं जिन पे हम फ्रीज ऑफ करते हैं ऑयल। उस टाइम में का ओवेरियन हाइपोस्टिमुलेशन मैंने आपको बता दिया कि we prefer to freeze them and then we utilize those embryos one by one or maybe two. We can transfer the two embryos in the next cycle because we do not have the fear of ovarian hypostimulation. And the patient है like 30-35 कहती है मुझे एक नहीं मुझे दो डलवाने। All right, go ahead, take two. Agonist trigger. This is also associated with the ovarian hypostimulation. उसमें होता ये है कि जब ovarian hypostimulation होती है, instead of abandoning the cycle, just letting go the cycle, हम agonist trigger कर देते हैं. And what the agonist trigger has the effect? उसका जो luteal phase है, that is disturbed. Luteal phase disturb हो जाता है, क्योंकि उसमें luteolysis जल्दी हो जाती है. तो उसमें हम prefer करते हैं when we have triggered the patient with the agonist कि उस cycle में सिर्फ embryos बना लें और next cycle में डालें. तीसरी चीज क्या है? एलिवेटेड प्रोजेस्टेरोन लेवल्स। वो भी उसके साथ है कि अगर आपको थोड़ा सा भी खदशा हो रहा है कि देयर इज सम डाउट कि कहीं ओवुलेशन हो तो नहीं गई, कोई फॉलिकल रप्चर तो नहीं कर गया, इन दैट केस यू जस्ट टेक द अदर एग्स आउट टू डू द एग रिट्रीवल एंड देन यू मेक द एम्ब्रियोज एंड ट्रांसफर इन द नेक्स्ट साइकिल, बिकॉज़ इफ यू ट्रांसफर इन द सेम साइकिल तो वो सिंक्रोनी खत्म हो जाएगी, वो एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी खत्म हो जाएगी कि अगर कोई एक फॉलिकल ओवुलेट कर गया है बिफोर. And in the poor responders में होता ये है, have you heard about the term dual stimulation? Dual stimulation is for those poor responders के हमने एक cycle में we have stimulated the patient. कोई एक या दो follicle बने and the rest of the follicles they are like 0.91 centimeter way behind. हमें पता है this is a poor responder patient. What we do, we take the two which are the mature ones out and giving them a break of 3 to 4 days, we stimulate them again, so that the follicles which are coming behind, they are also stimulated and we get good quality of eggs in the same one cycle, instead of just ignoring the rest of them. क्योंकि अगर 10 दिनों के बाद वो पीछे वाला अभी बना है 1 सेंटीमीटर का, तो उसको टाइम चाहिए ग्रो करने का. तो we are not wasting the eggs, we are doing the double stimulation in one cycle. But if we are doing double stimulation in the one cycle, what happens? The endometrium is not receptive. Endometrium को समझ नहीं आ रही मैंने करना क्या है. तो उसमें we just take the eggs out, do the make the embryos and then transfer in the next cycle. तो ये FTD से ना कितने फायदे हो रहे हैं ना कि this is going to benefit the patient. उसके बाद के एम्ब्रियो बायोप्सी, then we are talking about the PGT में क्या हो रहा है कि हमने एम्ब्रियो बनाया and at day 5 we take 1 or 2 cells out and send them for the biopsy कि इसकी genetic testing कर लें. The result will come after 2 weeks. तो उस 2 weeks तक क्या करना है? We keep that embryo in the incubator, हम उनको freeze करते हैं and then the result will come in और वो बताता है कि supposedly there were 5 embryos, number 1 is normal, number 2 is normal, number 3 is normal, number 4, तो हमें पता चल गया which is the normal and which is the abnormal, which we are not going to see in the first cycle. और number 1 मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं कह रही हूँ ओह जबरदस्त, ये तो ब्लास्टोसिस्ट बना है, इसको ट्रांसफर करते हैं. It might be an abnormal embryo. और फिर दुख होगा कि इतना अच्छा डाला और प्रेगनेंसी नहीं हुई और पेशेंट भी रोएगी कि आप तो कह रही थी कि बहुत अच्छा है और फिर मैं भी थोड़ी देर ऐसे ऐसे करके करूँगी हाँ डाला तो अच्छा था. तो हुआ क्या कि जो डाला था वो ठीक नहीं था एम्ब्रियो. तो apparently it is looking very nice, very good, लेकिन but it's not genetically sound. That's why the result of frozen embryo transfer is increased so much. कि अब हमने डाला ही एक ही डाला है और डाला भी जबरदस्त वाला डाला है, तो अब उसके इम्प्लांटेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे ना, मिसकैरेज के चांसेस ऑलमोस्ट नील हो जाएंगे. हो सकता है मिसकैरेज हो जाए, लेकिन इम्प्लांटेशन एंड प्रेगनेंसी एंड लाइव बर्थ रेट्स एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू इंक्रीज. तो अब क्या किया डोनर साइकिल्स, वी आर नॉट डूइंग द डोनर साइकिल्स ना, हम डोनेशन ले रहे हैं एग्स की एम्ब्रियोज की ना दे रहे हैं. तो दिस इज फॉर द इंटरनेशनल पर्पसेस कि कोई डोनेट कर रहा है अपने एग्स और फ्रीज कर रहा है तो उधर से ले रहे हैं, तो दीज आर फॉर द डोनर साइकिल्स. ये बात निकल गई. अच्छा ट्रांसफर कब कर रहे हैं हम, फ्रीज कब कर रहे हैं बेसिकली. तो देयर आर डिफरेंट स्टेजेस कि जिसमें ये एम्ब्रियो बन रहा है और
ये you can see कि हम जो freeze करते हैं embryos, we freeze the embryos at the 8 cell stage. This is the day 3, which is called the cleavage stage. This is the cleavage stage, the day 3 embryo. अगर और this is the blastocyst stage, the day 5 embryo. इन पे हम करते हैं. बाकी stages पे कर सकते हैं, but the results are not good. The results are good at the cleavage stage and at the blastocyst stage. So this is the slow freezing technique and the vitrification technique. And ये क्या है? ये आपको लगता है कुल्फियों के ड्रम कैसे लगेगा? गर्मियों में हम इनकी कुल्फियाँ जमाते हैं. These are the tanks, the cryo tanks, जिनके अंदर हम अपने embryos freeze करके रखते हैं. Embryos can be frozen as long as you want. मैं पेशेंट से कहती हूँ कि this is your jewelry and you are keeping in the locker. ये हमारे लॉकर है. और आप पर एनएम के हिसाब से पे करते हो और आपके जो है कि ज्वेलरी आपके ज्वेलरी ही है ना. तो वो हमारे पास है कि आप you can freeze your embryos as long as you wish. 6 months, 1 year, 2 year, 3 year. मेरे पास पेशेंट्स आते हैं repeatedly. एक दफा प्रेगनेंसी होगी after 2 years फिर आए हमारे वो 4 पड़े फिर 2 सालों में वो हमारे तो वो इस तरह करते 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 वो उन्होंने अपने एम्ब्रियोज इस्तेमाल किए. मैम जो नहीं होते इस्तेमाल उनको क्या करते हैं? उनको क्या करते हैं वो भी आगे बात करते हैं. So these are the metallic cans. इनके अंदर ये goblets है ना, इनके अंदर ये straws रहती हैं. We fix embryos in the straws, put them in the goblet, put them in the metallic can. तो ये आधे आधे आधी इस तरफ आ जाते हैं और आधे इस तरफ आ जाते हैं. And then these are the straws. और ये एक ग्राफिक आपको बताया कि किस तरह हमको फ्रीज करना. आपको भी वीडियो दिखाएंगे तो आज मैं आपको एफटी का तरीका पढ़ा के भेजने वाली हूँ. ये घर जाके करते रहिए. स्ट्रॉ मंगाएंगे. तो ये देखेंगे कि इस तरह जो है कि पूरी लेबलिंग हुई भी है with the straws and we are keeping the light of current. तो ये straws के साथ हमने लेबल किया हुआ है. So we have allocated the position कि इस position पे इस patient की का embryo पड़ा. So there is no confusion कि मैं उसका निकालते हुए उसका निकाल दूँ तो उसका निकालते हुए उसका. पूरी documentation है कि these 3 or 4 और God knows कितने embryos किसके बन रहे हैं उसके accordingly labeling करके उस cryo tank के अंदर हमने उनको position allocate कर दी है. एक स्टोर पर एक ही एम्ब्रियो का It depends कि अगर किसी के बहुत ज़्यादा embryos हैं तो हम एक straw में 2 freeze कर देते हैं और कभी एक straw में 1 करते हैं. कभी patient कहते हैं कि मुझे एक embryo चाहिए for the embryo transfer तो हम वो एक ही straw निकालते हैं. Sometimes patient says मुझे 2 embryo चाहिए तो फिर हम जिस straw के अंदर 2 होते हैं we take those 2 one straw which contains the 2 embryos. Young patients like 23, 24 which have the male factor in fertility तो उनमें तो कोई मसला नहीं होता. तो young patients हैं तो we usually transfer 1 embryo and we take that straw out of the cryo tank. मैम इसकी पर एनम कॉस्ट क्या है? Per annum cost है it's like 15,000 per annum. अब recently क्या है वो आपको बताएंगी मिस सहर. डॉलर महंगा. डॉलर महंगा हो गया. हम डॉलर में पेट कितने डालते हैं. अब 20 प्लस हो गई. अच्छा जी तो ये हमने अपने स्ट्रॉज रखे हैं और ये इस तरह है कि अंदर जाके फ्रीज करना. दिस इज ऑल द लिक्विड नाइट्रोजन जिसके अंदर ये अब ये अंदर फ्रीज होता है. एक बॉक्स एक पेशेंट की नहीं एक पेशेंट की उसके अंदर बहुत सारे अंदर लेबलिंग होती ये देखो ना मैं फिर से दिखाता हूँ कंपार्टमेंट्स आपको. होते हैं. अब ये जैसे ये पड़े हुए हैं सारे बहुत सारे पेशेंट्स. हैंगर्स हैं तो ऐसे निकालना तो उसमें पोजीशन एलोकेटेड है. एक स्ट्रॉ एक पेशेंट की है. ऊपर उसका नाम लेबल Labeling and everything. डॉक्यूमेंटेशन. वो एक पेशेंट की है कि उसके अब एक स्ट्रॉ में एक है कि 2 है कि कितने हैं तो वो उसकी अगर पीसीओ पेशेंट की हमारे पास बहुत सारे हो जाते हैं तो अगर 10-12 हैं तो वो स्ट्रॉस के साथ अंदर लेबलिंग करके हमने रखे हुए हैं. अच्छा जी ये थोड़ी सी वीडियो है इसको देखिए. दिस इज द विट्रिफिकेशन वीडियो. ये हमारी अपनी लैब की है. दिस इज आवर यूरोलॉजिस्ट मिस्टर काशिफ. ये आप दिखा रहे हैं आपको कैसे विट्रिफिकेशन करें. He is making all the arrangements
कि हमने इस तरह रेफ्रिजरेटर से अपना मीडिया निकाला एंड हाउ वी आर मेकिंग अ ट्रेस और किस तरह हम फ्रीज कर रहे हैं। तो ये है हमारे पास दो मीडियाज होते हैं जिसको फ्रीज करते हैं। एक होता है इक्विलिब्रेशन मीडिया और एक होता है विट्रिफिकेशन मीडिया। वी पुट द एम्ब्रियोज, अभी एम्ब्रियोज वो बने हैं जब हमने डिसाइड किया कि अब उनको फ्रीज करने हैं। एम्ब्रियोज बने हुए हैं, अब हमने इनको सिर्फ फ्रीज करना है। तो फ्रीज कैसे कर रहे हैं कि ये उन्होंने अंदर से एम्ब्रियोज निकाले हैं व्हिच आर इन द कल्चर डिश। अंदर से हमने फ्रीज, अब हमने प्लान किया ना कि हमने कुछ डाल दिए, अब हमने बाकी के फ्रीज करने हैं। तो अब जो फ्रीज होने लगे हैं वो ये फ्रीज हो गया। बस थोड़ा सा आगे कर। Now he is setting the medias in this four well और वो अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं कि किस पेशेंट में हमने फ्रीज करने हैं, कहाँ पे फ्रीज करने हैं, पोजीशन कैसे एलोकेट करनी है। और ये जो है कि अब स्ट्रॉस खोलने के जिनमें हमने अपने एम्ब्रियोज को फ्रीज करना है और उनकी लेबलिंग करेंगे वो सारी कि इस पेशेंट की दिस इज द रजिस्ट्रेशन नंबर, दिस इज द नंबर ऑफ द एम्ब्रियोज व्हिच वी आर गोइंग टू फ्रीज। तो सारा कुछ लेबल करके तो अब आगे आपको बता रहे हैं कि अब हमने फ्रीज कैसे करना है। ये स्ट्रॉस पड़े हैं जिनके अंदर हमने फ्रीज करना है। एंड दिस इज द लिक्विड नाइट्रोजन, इसका टेम्परेचर होता है -196 के मतलब रखता ही वो चीज जो है कि इट टर्न्स अप इनटू लाइक आइस। तो ये उन्होंने एम्ब्रियोज पकड़े हैं कल्चर डिश से और उन्होंने कल्चर डिश से पकड़ के ये एम्ब्रियोज हाँ उसमें पिपेट के अंदर स्टफ कर रहे हैं उसको एक डिफरेंट उनमें लेके अब ये उन्होंने उस स्ट्रॉ के ऊपर डालने जिसमें हमने फ्रीज करते हैं। उस स्ट्रॉ में वो भर देंगे एम्ब्रियोज। 95 to 97% of the time the embryos remain viable। ये विट्रिफिकेशन की यही खूबसूरती है कि टेक्निक हैज इम्प्रूव्ड। इट इज नॉट द स्लो टेक्निक जिसमें एक्स्ट्रा सेलर और इंट्रा सेलर आइस क्रिस्टल्स बन जाते थे, ये उस तरह की नहीं है। और अब उन्होंने के जब लिक्विड नाइट्रोजन में डाल के वो स्ट्रॉज में डाल दिए तो अब वो यहाँ पे खोल रहे हैं इसको और जो उन्होंने पोजीशन एलोकेट की हुई है उसमें ये एम्ब्रियोज जो है अंदर फ्रीज कर देंगे। ये उन्होंने पकड़ा है और ये उन्होंने जो उनको प्लेस एलोकेट की है ये उसमें डाल के और ये वापस हमें अंदर आ गया। ठीक हो गया। अच्छा अब ये तो हमने एम्ब्रियोज फ्रीज कर दिए हैं तो अब कभी डालने भी तो हैं, थॉ भी तो करने। ये तो हमने फ्रीज करके अब रख दिए एंड दीज एम्ब्रियोज रिमेन फ्रोजन फॉर एज लॉन्ग एज यू विश। अगर आप कहते हो मैंने नेक्स्ट साइकिल में डलवाने हैं, वी टेक दोस एम्ब्रियोज आउट। अगर आप कहते हो आफ्टर 1 ईयर और मेबी जितने भी साल हैं तो उसके लिए भी कैसे हम ट्रांसफर करें। ऐसे तो नहीं कि उस टैंक से निकाले और डाल दिए, उसके लिए क्या करना होगा। प्रिपरेशन होगी एंडोमेट्रियम। You have to prepare the endometrium. जिस डे के आपने फ्रीज किए हैं, you have to make the endometrium receptor and it has to be synchronized with the day of the embryo frozen. उसको synchronize करना होगा और उसमें जो है कि हमें endometrium की receptivity देखने के लिए we have to see the thickness of the endometrium. I generally prefer that it should be between 8 to 10 millimeter. जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी जितना वास्कुलर पैटर्न अच्छा होगा, जितनी ट्राइलेमिनर होगी, there are more chances of having a conception. If it's less than 7, the chances of conception are less. So to make the endometrium, उसके लिए हमारे पास we have different protocols. किस चीज़ से हम एंडोमेट्रियम बनाएंगे। If the patient is ovulating, उसकी natural cycle पे follicle बनते हैं, endo is good, we can use the natural cycle. We can use the stimulated cycle। जैसे आप ओवुलेशन इंडक्शन करते हो, एक फॉलिकल बनता है और फिर एंडो बनती है, तो जब फॉलिकल बनता है और एंडो बनती है तो आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो। और यू कैन यूज द HRT साइकिल।
and these are for those patients जिनकी anovulatory cycles हैं, periods आ नहीं रहे, 2-3 महीने आ रहे हैं, पता नहीं है. I generally prefer the HRT cycle because it is more doctor friendly. You can manipulate the cycle accordingly. यहाँ पे ovulation induction में होता है, जब follicle बन गया तो आपको खतरा रहता है कि फट ना जाए. और फट गया तो फिर वो timing आपकी खराब हो जाएगी. So in HRT cycle it is more convenient. तो ये इसी तरह बताया हुआ है कि in the ovulatory you can do the natural cycle, the modified natural cycle, in oligo or anovulatory the stimulated and the programmed cycle. डॉक्टर शादी नेचुरल साइकिल में अपना फॉलिकल भी तो बन रहा है नेचुरली जो बन रहा है बिल्कुल and we are introducing another embryo नहीं उसमें एम्ब्रियो तो नहीं ना बन रहा, उसमें एक फॉलिकल बन रहा है. ऑलरेडी वो उसकी उसमें नहीं मैं हम इंटरकोर्स अवॉइड करते हैं उसमें इंटरकोर्स अवॉइड करना है ना कि उसमें अगर नेचुरली एक फॉलिकल ग्रो कर गया इट्स 18 मिलीमीटर एंड द एंडो इज मोर देन 7 मिलीमीटर, तो आप क्या करते हो कि यू गिव द ट्रिगरिंग शॉट, जैसे एचजी लगा देते हो. अब मैंने एचजी लगाया और अब उसका जो डे 0 बनेगा वो परसों बनेगा, यानी एक दिन छोटी 36 घंटे के बाद, और उस 36 घंटे के बाद I am now going to give the progesterone to the patient. I am taking this endo to the time at which I have frozen the embryo. Agar day 3 का है तो I will give 3 days progesterone and on the 4th day I am going to transfer the embryo. उस day के साथ करना है. And if it's the blastocyst, I am going to give 5 days progesterone and I am transferring the embryo on the 6th day. उसको luteal phase में ही करना है ना. Embryo तो बना पड़ा है. Natural cycle में क्या होता है? फॉलिकल रप्चर किया, फिर उसने फर्टिलाइज होना है, फिर उसने जाना है इन द ट्यूब एंड देन व्हेन इट्स द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज इन द यूट्रस. तो हमने तो वो सारा प्रोग्राम कर लिया हुआ है ना टिल द ब्लास्टोसिस्ट. तो हमने वो वाला सारा फेज जो 5 डेज या 3 डेज जितने डेज की फ्रोजन साइकिल है, वी हैव टू मेक द एंडो अकॉर्डिंगली. अब फर्टिलाइजेशन तो नहीं होनी, एम्ब्रियो बना पड़ा है, हमने एम्ब्रियो को डालना उस वक्त जब इट शुड बी इन द यूट्रस. तो उस यूट्रस तक पहुंचने के लिए हमने एंडो प्रिपेयर किया ना. अब हमने वहां नहीं करना कि अब फॉलिकल रप्चर हुआ, फटा, ये हुआ. सॉरी, इसमें हम प्रोजेस्टेरॉन जो है वो मतलब डेफिनेटली 5 डेज तक देंगे कि ब्लास्टोसिस्ट है, या आप एंडोमेट्रियल थिकनेस देख लेंगे कि ऑलरेडी 7-8 मिलीमीटर है. अगर आपने डे 3 की फ्रोजन है तो डे 3 तक प्रोजेस्टेरॉन जाएगा, डे 4 पे आप ट्रांसफर करोगे एंड द प्रोजेस्टेरॉन विल गो ऑन. आपने बंद नहीं करनी आपने. ये वो तो है कि किस डे पे जिस डे के फ्रोजन थे उस पे डाल दें. अब जैसे नॉर्मली नेचुरली प्रोजेस्टेरॉन में तो बनते ही रह रहा है ना, तो वो तो चलता रहेगा. आपने जो ब्लास्टोसिस्ट इंट्रोड्यूस किया है वो अकॉर्डिंग टू द साइकिल डेज किया है. मैंने ये ब्लास्टोसिस्ट ऐसे किया कि मेरे पास डे 5 का ब्लास्टोसिस्ट था. ये वो वाला होता है व्हेन द ब्लास्टोसिस्ट शुड बी इन द यूट्रस. ठीक है, तो यूट्रस तक पहुंचने के लिए उसकी एंडो जो है कि इट शुड बी बिटवीन 8 to 1 मिलीमीटर, 8 to 1 सेंटीमीटर, 8 mm to 1 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए ना उसकी इम्प्लांटेशन. अगर उससे कम होगी, देयर आर प्रेगनेंसीज which has happened when the endometrium is 7 millimeter or less than 7 millimeter, but these are the rare things. हो जाती है प्रेगनेंसी, किसी की अगर एंडो बनती ही नहीं है ज्यादा तो उसको 7 मिलीमीटर, हम ये नहीं कहेंगे जब तक तुम्हारी एक नहीं बनेगी मैं नहीं करने वाली. हम बहुत सारी साइकिल्स में हम कैंसिल करते हैं, जो आपकी डॉक्टर बुशरा बात थी कि नेचुरल साइकिल में, नेचुरल साइकिल इज a bit confusing for the patient in the sense अगर उसकी उस साइकिल में ओवुलेशन ही नहीं होती, फॉलिकल नहीं बनता है, एंडो नहीं बनती, तो उसमें ये होता है कि प्रीवियसली वी यूज्ड टू प्रेफर द नेचुरल साइकिल्स, लेकिन फिर उसमें साइकिल कैंसलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है. कभी फॉलिकल नहीं बना, कभी एंडो नहीं बनी, पेशेंट आई कहीं और से एक साइकिल कैंसिल, 2 साइकिल, कहती कब डालोगे भाई. तो अब जो है कि बिकॉज नोबडी हैज दैट मच टाइम, तो जो हमारी प्रोग्राम साइकिल है दिस इज इन आवर हैंड्स कि हमने इतने मिलीमीटर उसको दिया, एस्ट्रोजन दिया, एंडो इस दिन बन गई, इस दिन, तो इट्स द कैलकुलेटेड थिंग. वरना साइकिलें तो सारी ठीक है. ये अकॉर्डिंग टू साइकिल डेज नहीं है कि अब ओवुलेशन अब आज 5वां दिन है, अब ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज अब इसमें यूट्राइन कैविटी में होना था, तो आज मतलब 5 डेज आफ्टर ओवुलेशन हम इस ब्लास्टोसिस्ट को उधर यूट्राइन कैविटी में इंट्रोड्यूस करते हैं. इस तरह से नहीं, इट इज कि हम खुद ही प्रोग्राम कर लेते हैं कि अब हम इसको प्रोजेस्टेरॉन देके प्रिपेयर कर लिए, 5 डेज हमने दे दिए, 7-8 मिलीमीटर हो गई है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द डे ऑफ द साइकिल हम उसको ब्लास्टोसिस्ट में इंट्रोड्यूस. इन दोनों में से किस तरह नेक्स्ट साइकिल में पीरियड्स आने के बाद पीरियड्स आए ना, डे 2 से मैंने अगर आई एम डूइंग द एचआरटी साइकिल
मैंने डे 2 से उसको प्रोजेस्टेरॉन देनी शुरू की एंड आई एम मॉनिटरिंग द पेशेंट। सपोज एट डे 12 उसकी एंडो बन गई है 0.9 मिलीमीटर, 0.9 मिलीमीटर, 0.9 सेंटीमीटर उसकी एंडो बन गई है, 0.9 बन गई उसकी एंडो। तो अब ठीक है ना कि एंडो तो बन गई। अब मैंने क्या किया कि आई एम कंटिन्यूइंग विद द स्टूडेंट एंड नाउ आई हैव स्टार्टेड द प्रोजेस्टेरॉन विद इट। अब मेरे पास डे 2 से स्टूडेंट दिया एंडो बनाने के लिए, और उसको मैं स्टेप अप भी कर सकती हूँ कि अगर किसी की एंडो बन जाती है से 4 मिलीग्राम प्रोगाइनोवा पे एस्ट्रोडायल वेलरेट, तो दैट विल कंटिन्यू। वो स्टेप थोड़े होते रहे, लेकिन एंडो बननी शुरू हो जाती है डे 7 डे 8 लेकिन जब वो फ्लो कम हो जाता है। तो फ्रॉम डे 2 आई हैव स्टार्टेड गिविंग द प्रोगाइनोवा द एस्ट्रोडायल वेलरेट, और उसको मैं 12वें दिन तक लेके गई हूँ। एंडो बन गई है 0.8 और 0.9 और मे बी 1 सेंटीमीटर, इतनी बन गई। नाउ आई हैव एडेड अप द प्रोजेस्टेरॉन, मैंने प्रोजेस्टेरॉन ऐड कर दिया और प्रोगेनोवा भी चल रही है, वो भी चल रही है। ये देखो ना, दिस इज जस्ट मिमिकिंग द नेचुरल साइकिल कि उसमें एस्ट्रोजन बात तो नहीं ना हो जाती, एस्ट्रोजन चल रही है साथ में प्रोजेस्टेरॉन के, बिकॉज़ नाउ द पेशेंट हैज एंटर्ड इनटू द लुटियल फेज। यूट्यूब पे दोनों हम हमने उसी एक को एंडो बना देते हमें हैं। एक अच्छी एंडो बनानी है, मैं ऐसे नहीं कर सकता कि मैं एंडो को एकदम बंद कर दूं तो वो साइकिल में पीरियड्स आ जाएंगे। एस्ट्रोजन चल रही है एंड नाउ हैव एंटर्ड इनटू द प्रोजेस्टेरोनिक फेज, द लुटियल फेज, और प्रोजेस्टेरॉन स्टार्ट जाता है। जिस डे के फ्रोजन है मैंने उस डे पे डाल दिए एंड देन द पेशेंट इज कंटिन्यूइंग टेकिंग द एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरॉन टिल द प्रेगनेंसी टेस्ट। ठीक है, जब प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ जाएगी फिर प्रोजेस्टेरॉन से हो जाएगी। मेरी बात खत्म नहीं हुई। प्रेगनेंसी टेस्ट किया ना, पॉजिटिव आ गई पेशेंट एंड द पेशेंट इज ऑन HRT, the patient will keep on taking the estrogen and progesterone till 10 weeks of gestation. When the placenta will take over, the placenta will take over, और फिर वो सारे estrogen progesterone और बाकी सारी चीजें वहाँ पे हो जाएंगी। Because here there is no corpus luteum in the HRT cycle. There is no corpus luteum. There is no estrogen progesterone inside the body. I am just controlling the cycle from outside. पर अगर प्रेगनेंसी हो के मैं सब कुछ बंद कर दूंगी तो there is no placenta because there is no corpus luteum. हमने लास्ट से कब ट्रांसफर किया है इसमें? हमने डे 5 का अगर हमने फ्रीज किया हुआ था तो मैंने डे 6 पे डाला। यानी जब एस्ट्रोजन कर रहे थे। नहीं बेटा, प्रोजेस्टेरोन जब दी है मैंने 12 दिन एस्ट्रोजन दिया ना, उसके बाद 5 दिन मैंने प्रोजेस्टेरोन दिया, उसके बाद अब ये 18वें 19वें दिन पे डाल रहा है। समझ आ गया। शादी वो जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन मतलब ग्राफ है ना, उसके अकॉर्डिंगली आप चल रहे हैं। 18वें 19वें दिन पे डाल रहा है, बिल्कुल उसी तरह की जब उसने 18वें 19वें दिन पे HSG से उनको ट्रिगर करते हैं where I have used the ovulation cycle. HRT में ट्रिगर करने क्योंकि there is no follicle वो जिसमें अगर नेचुरल साइकिल में follicle बना हुआ है या स्टिमुलेटेड साइकिल में follicle बना हुआ है then you need the triggering sort of it. यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। अच्छा जी अब क्या करें? सो कौन सा अच्छा प्रोजेस्टेरॉन कौन सा? Micronized progesterone in the form of cyclogist. We have got it 4 प्रोटोकॉल नहीं होगा अभी। तो अब कौन सा प्रोटोकॉल अच्छा है कौन सा बुरा है? The studies they are not in favor of one or two. This is whichever is suitable for the patient according to the characteristics of the patient. Ovulatory है, उसके पास टाइम है, वो मेडिसिन नहीं लेना चाहती, वो चाहती नेचुरल पे जाए। The patient doesn't have time, she is anovulatory, cycles irregular and go for HRT. So that depends upon the characteristics of the patient. दो शादी के रेट्स में डिफरेंस होता है। Sorry, फ्रोजन एम्ब्रियो के ट्रांसफर के रेट में और उसमें फ्रेश एम्ब्रियो rates मतलब आपके चार्जेस हॉस्पिटल चार्जेस में नहीं डिफरेंस है। उसमें फर्क नहीं होता। वो उसमें फर्क इसलिए नहीं होता। आपने 4-5 एम्ब्रियो कर लिए फीस, ठीक है ना, तो आप क्या उससे एक ही दफा के चार्जेस लेंगे, उसकी एक दफा भी नहीं हुई प्रेगनेंसी, 2 दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा उसकी वो हो मेरे को अब हमने उसकी शादी तक का तो नहीं ना कर, उस एम्ब्रियो की शादी होगी तुम पैसे लेंगे, वहां तक तो बात नहीं ना। बात ये होती है कि एक साइकिल है ना, हमने उसको सारे इंजेक्शंस लगाए, सारा कुछ किया, हमने ट्रांसफर कर दिया, अब उसकी प्रेगनेंसी हो रही है कि नहीं हो रही, हमने सारा काम कर दिया। एक साइकिल ठीक है, अगर एक साइकिल में हमने टोटल ट्रांसफर कर दिया ना तो उसका पैकेज खत्म हो गया। नाउ इफ शी वांट्स एन एफएटी के अब मेरे पास बाकी 2 पड़े हैं, अब मैंने वो स्टार्ट करने हैं, तो she has to pay for that FET cycle. This is not equivalent to the whole cycle. जब तो एम्ब्रियो बना पड़ा है ना, she has to pay us like
1 लाख और 150 जो भी उस वक्त का करंट रेट होगा। तो अगर पूरी साइकिल करें when we gonadotropins and all those things that will cost like between 5 to 6 lakhs। अब उसको वो नहीं देना, अब उसको उतना ही कन्फर्ट नहीं करना है, बाकी रह गया ठीक है। अच्छा जी, अब क्या कह रहे हैं भाई? शादी एक और क्वेश्चन है, जब आपका नेचुरल साइकिल में जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम बन गया है, इसमें हम ट्रांसफर का सोल्यूशन है, जब आपने भी प्रोजेस्टेरोन देखा नहीं कोई सीरीज से ट्रिगर किया वो बन गया, इसमें क्या इसकी डोज ऑफ प्रोजेस्टेरोन में फर्क है एज कंपेयर टू द साइकिल वेयर वी बिल्कुल फर्क है, बिल्कुल फर्क है। When we are using the ovulation induction cycle where the follicle has already been there and there is a proper luteum, तो हम क्या करते हैं एक्चुअली क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी हो जाती है, इट्स अ वेरी प्रेशियस प्रेगनेंसी, यू विल गिव द लूटियल फेस सपोर्ट, दे देते ना थोड़ा बहुत ये इसको दे देंगे फेस हम दे देंगे इसको प्रोफिलेक्सिस होता है, साइकिल इसी तरह उस साइकिल को लेके जाना ये डोज थेरेपी का काम हो गया, उसमें फर्टिलाइजेशन उसमें पहले ही हो चुकी है, उसमें डोज कम हो जाएगी एज कंपेयर टू दोस साइकिल्स व्हिच आर टोटली HRT साइकिल्स। एस्ट्रोजन तो पहले ही इसमें बन देखिए आपने ये नेचुरल साइकिल वाला है, इसमें आप प्रोजेस्टेरोन जो है वो कब शुरू करते हैं, कौन सी टाइम शुरू करते हैं और कितनी कौन कौन सी प्रोजेस्टेरोन कितनी गिरते हैं? देखो बेटा, इसमें हमने जो प्रोजेस्टेरोन शुरू किया जब हमने कहा कि उसका प्रोलिफरेटिव फेस यहाँ पे आ गया है, एंडो होगी 8 मिलीमीटर और 9 मिलीमीटर, ठीक है, इतनी उसकी एंडो बन गई है। अब हमने उसको लूटियल फेज पे लेके जाना है, तो हमने तब से उसको प्रोजेस्टेरोन देनी शुरू की। यानी आपके conception the progesterone is going till the conception and if it's the pregnancy is there till 10 weeks 10 weeks of pregnancy. ठीक है। अब क्या है कि वीकेंड जब हमने उसको करना है थॉ करना है, अब मैंने उसको थॉइंग के ऑर्डर्स देने हैं, तो हम वो ऐसे नहीं होगा कि मैंने कहा थॉ कर दो उसने 10 निकाला उसने कहा हो गया। वो होता ही है कि व्हेन यू order for the thawing, it will take almost 4 to 5 hours. कि उसको thaw करें, thaw करके the embryo will be in the incubator for a couple of hours and then you can transfer. You can transfer on the same day or you can transfer on the next day. अगर सब सपोज करो कि मैंने दोपहर को इटी करनी है, मैंने सुबह कह दिया कि thaw कर दो embryo, उन्होंने सुबह 9 बजे thaw करके मैंने 2 बजे आके डाल दिया। मैंने दोपहर को कहा 2 बजे के आई एम गोइंग टू डू द एम्ब्रियो ट्रांसफर, एंडो भी बन गई है, सारा कुछ बन गया, प्लीज थॉ द एम्ब्रियोस फॉर मी। और पेशेंट ने कहा 1 डालना है, पेशेंट ने कहा 2 डालना है, तो मैंने अपने लैब को कहा प्लीज थॉ 2 एम्ब्रियोस। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इवनिंग में थॉ किए एंड दे पुट देम इन द इंक्यूबेटर एंड ऑन द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई एम ट्रांसफरिंग द एम्ब्रियोस। होम टेम्परेचर में खा होते हैं। अभी देखना ना। अच्छा, तो देर से थॉइंग आ गया। अब हमने थॉ करने हैं एम्ब्रियोस, तो फिर हम अपने टैंक्स के पास गए जहाँ पे जो पोजीशन एलोकेटेड थी, मैंने देखा कि दिस इज द पेशेंट और ये एलोकेशन थी एट दिस प्लेस एंड नाउ ही इज प्रिपेयरिंग द डिशेस फॉर द थॉइंग विद द मीडिया एंड वी हैव डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ मीडिया कि जिसमें हमारे पास है मॉक्स मीडिया एंड वन मोलर मीडिया। अब उन्होंने देखा जी कि पेशेंट ने कहा कि हमने एक एम्ब्रियो थॉ करवाना है और इट माइट बी पॉसिबल कुछ 1 या 2 एम्ब्रियोस हो, जितने भी हैं उन्होंने उसको निकाला है स्टॉक उसमें से, और निकालने के बाद जैसे ही निकाला है ही हैज पुट देम इन द लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है। अब ऐसे नहीं कि बुक ऐसे ही डाल रही है, वो टेम्परेचर मेंटेनेंस के बाद गई है। अब पीछे जो आपको लाइट नजर आ रही है दैट इज कीपिंग द टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब रूम टेम्परेचर पे उसको थॉ को लेके आया, उन्होंने वहां से निकाला स्ट्रॉ में से उसको निकाला एंड ही इज पुटिंग देम इन द मीडियास, और उसमें डिफरेंट मीडियास जो है मॉक्स मीडिया और ये मीडिया वो मीडिया थॉइंग में और फ्रीजिंग में। फ्रीजिंग में इट टेक्स लाइक 20 मिनट्स, थॉ करते भी लगते हैं ऑलमोस्ट 20 मिनट्स। तो उन्होंने वो मीडिया में करके अब वहां से कल्चर वाली ट्रे निकाल रहे हैं, छोटी डिश निकाल रहे हैं। फिर जब उन्होंने कर दिया डिफरेंट मीडियास, नाउ ही विल पुट दोस एम्ब्रियोस जो मैंने कल ट्रांसफर करने हैं इन द डिश and then he will store them in the incubator. थॉ करने के बाद इंक्यूबेटर में रख दिए कि ये कल डॉक्टर शाजी ने ट्रांसफर कर दिया, ये डॉक्टर सफिया ने ट्रांसफर कर दिया, ठीक हो गया।
तो अब ये देखिए जनाब कि वो उसी तरह पिपेट में उसको पकड़ना है कि जो आपके यहाँ पे जो इंक्यूबेटर में लेके जाएंगे वहाँ पे आइडेंटिटी या उसकी जो लेबलिंग वो सारी उसकी डिश के ऊपर उसकी सारी चीजें हैं कि ये बिल्कुल लिखा हुआ है कि इस पेशेंट के एम्ब्रियोज हैं और जो इंक्यूबेटर में 37 डिग्रीज पे वो रखेंगे। ऐसे नहीं कि थॉ करने के बाद उनको ऐसी रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे, वो करके उन्होंने अंदर रख दिया मीडिया के अंदर पहले डालें, उसके बाद फिर उनको करने के बाद ये यहाँ पे था नाउ कम्स द डे ऑफ ईटिंग। अब हमने ईटी करनी है, थॉ करवा ली है मैंने थॉ करवा के रख ली है इंक्यूबेटर। अब मैंने कहा जी अब मैंने ईटी करनी है, तो अब हम जो ईटी करने लगे हैं तो कितना इनाम साहब दूसरी मैम सो दिस इज ट्रॉली। इसमें बड़ी बेसिक सी चीजें हैं, द स्ट्रैप्स व्हिच आर डिप्ड इन द मीडिया, और ये मैंने उनकी जो वजाइना एंड सर्विक्स है आई एम क्लीनिंग विद द नॉर्मल्स में, नॉट विद द पायरिन, विद द नॉर्मल्स में। फिर मैंने क्या लिए थोड़े से स्ट्रैप्स जो पड़े हुए हैं which is dipped in the media, with these straps I'm going to clean the cervix so that it will be free from the mucus. अगर mucus रहेगा तो my embryos will stuck up in the mucus, तो वो मैंने वो clean कर दी है, ये stuck हो गया। और अब मैंने क्या किया, because मैंने पहले से ही उसकी I know the length of the uterine cavity. This is the Cook's catheter and this is the outer catheter. I am adjusting the plunger according to the uterine cavity. अब वो मैंने उसको अंदर डाला है in the and it should go at the level of the internal os. वहाँ पे because the ultrasound guided you can see it over here, ये मेरा ये आ रहा है और ये internal os जाके हो गया। So it means this embryo transfer is a very simple procedure. It will hardly take 2 to 3 minutes if it's easy. पर अगर मुश्किल है तो पसीने छूट जाते हैं। तो वैसे तो from the loading till the end, तब ये देखो मैंने उसको कहा है कि जो है एम्ब्रियोस को लोड करो इन द कैथेटर, तो उसने वो जो इंक्यूबेटर में रखे थे अब वो मेरे लिए लोड कर रहे हैं इन द इनर कैथेटर। आउटर कैथेटर मैंने डाल दिया हुआ, जब मुझे पता चला इट्स एन इजी नेगोशिएबल सर्विस, मैंने कहा लोड द एम्ब्रियोस। पहले से लोड नहीं करवाने, क्योंकि 2 से 3 मिनट अगर वो बाहर ही रहे हवा में तो देयर इज अ टेम्परेचर इंसल्ट, तो होल प्रोसीजर टेक लाइक 5 to 7 मिनट्स। लेकिन जब से ऑफ करने के बाद मेरे पास आएंगे मुझे उसको 2 मिनट के अंदर अंदर डालना है। सो ही इज थ्रोइंग द एम्ब्रियोस फॉर मी, उन्होंने इसमें डालने हैं। ये लैब भी उसी रूम में है, ये साइड पे है, ये साइड पे है। अब वो पिपेट से वो एम्ब्रियोस पकड़ेंगे जो हमने डिसाइड कर किया था कि दीस आर द 2 एम्ब्रियोस व्हिच आई एम गोइंग टू ट्रांसफर। तो शायद we follow the sound that they did. वो मैंने पहले किया। अच्छा ये हमारे असेसमेंट नीचे देखा हुआ कि दिस इज द एज सेल एंड दिस इज द ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, कि वो मुझे बता रहे हैं कि ये एम्ब्रियोस हैं और ये मुझे पिक्चर आएगी कि दीस आर द एम्ब्रियोस व्हिच वी आर गोइंग टू ट्रांसफर। तो अब उन्होंने पिपेट से ये एम्ब्रियोस हैं उनको वो सेपरेट कर लिए मेरे लिए कि हम ट्रांसफर करने लगे, और ये उन्होंने उस डिश के अंदर डाला, ठीक है। अब जो इनर कैथेटर है जिसके अंदर उन्होंने मुझे ट्रांसफर करने हैं, ये उन्होंने इनर कैथेटर निकाला है, इसका आउटर में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। सो दिस इज द इनर कैथेटर, इसके अंदर वो एम्ब्रियोस हैं कि वो उसको अंदर ले लेंगे। और वो मुझे जो ट्रांसफर होगा इन द लैब वो एक कवर के अंदर ट्रांसफर होगा। ये उन्होंने पकड़े हैं और ये कवर के अंदर उन्होंने जो आउटर कवर है उसके अंदर ये ऐसे डाल के, तो जब मैं कहूँगी थॉ द एम्ब्रियोस को थॉ करके इस तरह मुझे खिड़की से दिस इज द लैब एंड नेक्स्ट टू द लैब इज द ओटी, तो ये मुझे यहाँ पे हैंड ओवर करना है। ये टाइम नहीं खराब होना चाहिए बीच में। अब ये मैंने पकड़ा है लोडेड गन और ये मैंने ट्रांसफर किया अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेड, ये हो रहा है सारा कुछ। अब ये अंदर जा रहा है, यू कैन सी कि ये एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ है, नजर आ रहा है जी हाँ, ये यहाँ के एंड इट्स अ वेरी परफेक्ट ट्रांसफर 1 to 1.5 सेंटीमीटर बिलो द फंगस। अब मैंने पीछे से इंजेक्ट किया, जस्ट अ जेंटल पुश एंड द एम्ब्रियो विल गो देयर लाइक दिस। ये वाइट लाइन ये यहाँ पे आ गया एम्ब्रियो, अब जब आ गया तो विद द रोटेटरी मोशन I have taken the inner catheter out और उसके साथ मैंने outer किया है and I will send this catheter to the lab to see whether there is any retained embryo in the catheter or not. दोबारा नहीं खोल सकते।
तो क्योंकि अगर रिटेन होगा तो they will say there is one embryo still in the catheter, या वो कहेंगे all gone. When they say all gone, then I will और पीछे थोड़ा सा पीछे करेंगे क्या देखना चाह रहे हैं. अब एम्ब्रियो का डॉट होगा ना, एम्ब्रियो का वो आप बच्चा ऐसे ऐसे करता नजर तो क्या आएगा, तो एम्ब्रियो का डॉट सा होगा जो नजर आएगा. ये कनेक्टेड नजर आएगा, ऊपर एक डॉट होगा जिसको पुश करते हैं. हमने जो फ्लूइड अंदर डाला है ना वो डॉट अब शायद सारी टेक्निक आ गई. ये देखिए ना, ये हमने डाला और मैंने डाला है 1 सेंटीमीटर बिलो द फंडस. ये कैसा आ गया ना. अब इसमें मैंने पुश किया, अब ये देखो मैंने जेंटल से पुश किया और पुश करने के बाद मुझे वहाँ पे डॉट नजर आ रहा है. जब मुझे डॉट नजर आ रहा है, ये डॉट नजर आ रहा है ना, और फैल गया है जरा, लेकिन डॉट नजर आ रही है which is 1 centimeter below the fundus. और जब मुझे नजर आ गया तो I have taken the inner catheter, then the outer catheter, send the catheter to the lab to see whether all the embryos have gone or not. अगर कोई रिटेन है तो फिर अगर तो retained है, they will reload it again for me और मैं दोबारा से उसी सिटिंग में ट्रांसफर कर दूँ. उसी कैथेटर उसी catheter या से. दूसरा यूज करें. उसी catheter से क्योंकि किसी और के लिए तो इस्तेमाल नहीं हुआ. ठीक है जी. तो अब आगे क्या करें, हमने ट्रांसफर कर दिया. अब आगे है I give the luteal phase support and after 14 days हम उनको डेट देते हैं for the details कि हम प्रेगनेंसी करवा लें. और उसके बाद क्या हुआ, पॉजिटिव हो गए तो estrogen register will go on and scan for the fetal heart at 6 weeks and then we give them the lutels और मिठाई खाते हैं. आगे भी कॉम्बी नेगेटिव होता तो क्या होता. अच्छा उसके बाद नहीं, उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता नेगेटिव होता है, we'll arrange a meeting for the negative counseling and we'll discuss the issues that where we or where the patient or where the things have gone wrong. कहाँ कुछ पेशेंट्स पॉजिटिव होने के बाद कहते हैं, पॉजिटिव होके भी कहते हैं हम तो पॉजिटिव होते हैं सारी दवाइयाँ छोड़ दी. हाँ अक्सर ऐसा करते हैं. या पेशेंट खुद कहते हैं कि we have missed a couple of medicines in between. तो वो पता चलता है कि हुआ क्या, नेगेटिव की वजह क्या है, पॉजिटिव की वजह क्या है, कहाँ गलती हो गई. तो वो हम चीजें आपस में डिस्कस करते हैं. अच्छा अब ये जो है वॉमिटिंग एंड वाइनिंग, डज इट गोइंग टू अफेक्ट द एम्ब्रियो? कि मैंने बायोप्सी की, एक एम्ब्रियो बन गया था ब्लास्टोसिस्ट, मैंने उसके 2-3 सेल्स निकाले और फिर मैंने फिर फ्रीज कर दिया और मैंने फिर निकाला और फिर मैंने उसको थॉ किया, मैंने फिर फ्रीज कर. So that this repeated freezing and thawing is going to affect the quality of the embryo? Yes. Yes, to some extent. To some extent, but not like a degenerate हो जाते हैं. Especially वो वाले हो जाते हैं जहाँ पे पेशेंट ने अपने grade 2 के embryos freeze करवाने हैं. तो उसके पास he has no other option other than to freeze a grade 2 embryos जो already grade 2 के होंगे तो उनमें fragmentation आती है. Grade 1 embryos they do survive. अच्छा अब क्या करें जनाब, हमने कहा कि ये हो गया. अब ड्यूरेशन ऑफ फ्रीजिंग इट कैन बी अनलिमिटेड टाइम. अब risks, there are some risks because this is a procedure and every procedure has some risks. तो रिस्क क्या है, क्या हो सकता है, क्रॉस कंटेमिनेशन. उस कंटेनर के अंदर हमने ठट सारे रखे हुए थे, क्या कंटेमिनेशन नहीं हो सकती. These are the practical risks and these are not documented anywhere in the studies के कुछ ऐसे, but these are the practical risks that there are chances of contamination. But we are being keeping the embryos which are contaminated, like those who have HIV or hepatitis B or C or COVID in the separate containers. And then accidental warming. हमने कहा कि उसके अंदर liquid nitrogen थी, अगर उसका level एकदम down हो जाए तो हमने तो सारे उस temperature में रखे हुए हैं तो क्या वो embryos खराब नहीं हो सकते. So there is special monitoring system in the cryo tanks कि जब उनकी liquid nitrogen का level कम हो जाता है, the alarm start ringing. तो हम उसको उसी तरह fill कर देते हैं. तो इस तरह के accidents नहीं होते. Movement of the samples in and out temperature ये मैं भी बात करूँगी. Outcomes क्या हैं? Outcomes क्या है? Cryo survival हमने कहा कि almost 95 to 97% है. Genital abnormalities के भी हमने बता दी, PGTA करेंगे तो कम होगा. Fetal maternal outcomes क्या है? इसमें जो outcomes हैं, there are low risk of placenta previa, placental abruption, and low birth weight babies in the frozen cycles. The things
ये जो प्लेसेंटल अब्रप्शन और पीडिया है, इस पे स्टडीज ने कहा है कि we cannot explain on the basis of on the scientific basis ये कम क्यों हो रहा है, but we have observed, we have noticed कि ये चीजें कम हो रही हैं और जो चीजें ज्यादा हो रही हैं, हाइपरटेंशन ज्यादा हो रही है with diabetes। क्यों ज्यादा हो रही है? Especially in those FETs where we have used the HRT cycle, जहाँ corpus luteum नहीं है। तो कहते हैं जो corpus luteum है, that is not only the estrogen and the progesterone but other vasoactive substances as well. Vascular endothelial growth factors and the relaxants which are vasodilators. तो वो जो HRT cycle में करें उनमें hypertension ज़्यादा होता है। But I myself is doing almost 90% of my FETs are on HRT cycles, but I haven't come across the patient having hypertension. हम अगर जनरल गायनी ऑप्शन में देखें तो जो जनरल पेशेंट्स हैं उनको क्या हाइपरटेंशन नहीं होती, उन्होंने नेचुरली कंसीव किया सारा कुछ किया, सो देयर इज नॉट मच डिफरेंस कि उन्हें हाइपरटेंशन हो। और पोस्टमॉर्टम हेमरेज लार्ज को रेट्स मेरे बच्चे जो हैं कि वो 3.2 के होते हैं, तो ऐसे मैक्रोसोमिक के ऐसे नहीं है until and unless the woman is diabetic or कोई और मसला है, otherwise the babies they are of the normal weight। अच्छा, हम एम्ब्रियोस की तो फ्रीजिंग करते हैं, क्या हम एग की फ्रीजिंग कर सकते हैं? हम एग की फ्रीजिंग कर सकते हैं और हमने की भी है इन द एरा ऑफ कोविड। पहले क्या हुआ था कि हमने साइकिल शुरू की और एट द टाइम ऑफ ट्रिगर में पता चला ओ द पेशेंट इज कोविड पॉजिटिव, या पता चला द मेल इज कोविड पॉजिटिव। अब क्या करें? तो इन द इनिशियल फेज जब फर्स्ट वेव आई थी तो वी हैव कैंसल्ड सो मेनी साइकिल्स के फॉलिकल बन गए 1.8 1.9 तो खूबसूरत बन गए, लेकिन पेशेंट पॉजिटिव हो गई, कॉल ऑफ द साइकिल बिकॉज दैट डिजीज वाज समथिंग न्यू फॉर अस, वी डिड नॉट नो हाउ टू हैंडल द थिंग्स और हमें लग रहा था कि these things are going to transfer in the offspring and there were no guidelines, no nothing, we are just cancelling the patient and that is giving an extra economic burden to the patient and to the center। पेशेंट कहे कि मैं तो आखिरी दिन मुझे कैंसिल किया है, सेंटर कहे कि हमने तो सारे इंजेक्शंस लगाए हमारा के, तो फिर we have to see the things, कुछ तुम कर लो तो फिर कुछ हम कर लेते हैं, तो भी दफा फिर ट्राई करते हैं। तो फिर जैसे जैसे गाइडलाइंस आई, जैसे ऑलराइट take the embryos out, ovum pick up kar lo but do not transfer until unless the things, the disease is going to subside। तो हमने उस जमाने में we started doing the egg freezing। Egg freezing हम उस वक्त भी करते हैं on the day of the ovum pickup, husband is unable to give the sample or the biopsy is already being planned but there are no sperms। अब क्या करें? तो we just keep the eggs and we freeze them। फिर क्या है? कैंसर ट्रीटमेंट। देयर आर यंग गर्ल्स हु आर कमिंग अप कि जी कैंसर हो गया है, तो अगर कैंसर की ट्रीटमेंट करेंगे तो दैट इज गोइंग टू affect their ovaries, that is going to affect their health। So before starting with the treatment, please take my eggs out and freeze them and then I'll use later on। And then the social freezing, we are not doing the social freezing। ये बाहर वालों के लिए ये है कि the women they are like career oriented हैं, वो कहती हैं कि अभी नहीं बच्चा चाहिए लेकिन मेरे एक्स फ्रीज कर दो when I have time, तो यू ना हो कि 40 साल की मैं हो जाऊँ तो उस वक्त AMH ड्रॉप कर जाए कि क्वालिटी ड्रॉप हो जाए, just take my eggs on when I have time, I do the things। Dr. Shasi, आपको opportunity recently I have heard many patients उनके concern ये था कि first की शादी नहीं हो पा रही, वो मुनासिब मैच हमारी साइड की बात है, मैच नहीं मिल रहा और उनकी ये चीज़ उन्हें वरी करती है कि मेरी एज ज़्यादा और ये मेरे कम हो जाएंगे, क्वालिटी कम, अपने एक्स फ्रीज करा दो। कुछ लोगों ने इसका जिक्र किया है रिसेंटली, तो देखो अभी ना बहुत सारी चीजें जो हैं कि we do not have those guidelines। जब हेल्थ मिशन में गाइडलाइंस बताएगा कि where we can draw a line कि तो ही हम करेंगे, हम अनमैरिड बच्ची के हम एक्स करेंगे तो उसके लिए हाँ तो वो कैसे करेंगे? तो बहुत सारी चीजें हैं ना कि वो हमारे पास उस तरह की गाइडलाइंस है वो कि we can do the social freezing, we can do it। लेकिन ये जो है कि अब कुछ ऐसे भी खवातीन हैं जो कहती हैं कि मुझे परफेक्ट मैच नहीं मिला तो तुम वो बना लो, जस्ट कीप द एग्स और जब मिलेगा तो फिर देख लेंगे। तो ये बाहर वालों की तो बात है, लेकिन हमारे वालों के भी वहाँ तक नहीं पहुँच गई। अगर कैंसर की जैसे ट्रीटमेंट है तो अनमैरिड गर्ल या गर्ल अनमैरिड को आप कैंसर को लेनी पड़ जाए तो इसके लिए आप नहीं करते या उसके कर लेते? देखो
उसके देखो ना डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है ना कि हम किस लिए कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसकी तो एक और रिक्वायरमेंट होगी ना, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल ग्राउंड्स। जैसे लॉ ना पेशेंट रेफर कर सकते हैं। लॉ है फीसिंग हो जाती है। कोई लॉ है अनमैरिड का कोई पाकिस्तान में एज सच कभी कोई लाइक दिस ये कैंसर मेरी स्टूडेंट की मेडिकल स्टूडेंट हम कर सकते हैं, लेकिन वी नीड परमिशन ना, special permission that it is on the medical grounds we are keeping the eggs, because we are not like कि हमने ये eggs 5 बने 2 किलो ले 2 किलो ले, we are not doing the social, हम इतना social काम नहीं करते। हमारे जो eggs है this is for the same patient, the sperms eggs is for the same patient, वो couple की eggs और sperms होते हैं, not the third person। हम ऐसे बना के जैसे बाहर होते हैं, they are making a pool of the embryos and the eggs, जिसको चाहिए 2 किलो चाहिए, जिसको चाहिए, we are not doing the donations। जिनके अपने हैं, that should be a written document on the medical grounds। donation वगैरह कोई चीज नहीं है। सीमन फ्रीजिंग तो वो कैंसर वाले पेशेंट की होती है। सीमेंट फ्रीजिंग भी करते हैं कि समटाइम्स पेशेंट सेज के अगर मेरी जिस टाइम पे बेगम का होम पिकअप होगा आई विल बी नॉट अवेलेबल, जॉब के सिलसिले में बाहर जाना है तो आप मेरी बेगम की ट्रीटमेंट शुरू करें, आई विल बी नॉट अवेलेबल, प्लीज फ्रीज माय स्पॉन्स, तो हम सीमेंट फ्रीज कर लेते हैं कि ये तो मजबूरियां है ना, तो हमने उस सीमेंट कहीं और थोड़ी इस्तेमाल करना, दिस इज फॉर द सेम पेशेंट। अच्छा जी, तो अब जो आपका क्वेश्चन था डॉक्टर आबिया का कि हम क्या करते हैं, we store the embryos, we discard the embryos, और बाकी चीजें जो हैं we are not doing that, we are not doing the compassionate transfer। कुछ लोगों को पता है what is compassionate transfer, इसका मतलब है कि पेशेंट जो है कि हम उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, लेकिन वो ना किसी को देना चाहती है कि किसी और को दे दे, ना वो चाहती है कि मेरे एम्ब्रियोस रिसर्च में काम हो, ना वो चाहती है कि मेरे एम्ब्रियोस डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे, देयर इज ऑलवेज अ गिल्ट इन द हार्ट के मैंने अपने एम्ब्रियोस को खराब कर दिए, तो कहती हूँ ऑलराइट ट्रांसफर दोस एम्ब्रियोस इनसाइड माय बॉडी एट द टाइम व्हेन इज लेस लाइकली चांस ऑफ हेल्थ इन्फेक्शन। डाल दो कि मैं जो मेरे एम्ब्रियोस मुझे में डाल दो, मेरी इन द वजाइना में डाल के छोड़ दो, मुझे मेरे एम्ब्रियोस मेरी बॉडी में, और at a time when the lining is just 2 millimeter or 3 millimeter, it's not going to have a conception. So this is called a compassionate transfer. So we are उसमें डालने, so we are not relating the eggs and we are internationally जो surplus embryos होते हैं वो research में उसका काम आ रहा होता है कि उन पे हम करेंगे क्या हो सकता है, the stem cell therapy। So vitrification has a great breakthrough, और सारी चीजें हमने भी डिस्कस की हैं कि we can do the elective embryo transfers, it reduces the risk of ovarian hyperstimulation, it optimizes endometrial septicity and it facilitates the fertility preservation। अब फिर वही पहले वाला सवाल है, freeze all for all, freeze all for all means you are freezing all the embryos for all the patients and you are doing the FETs, who are in favor of freeze all for all, and freeze only means there are some provisions, there are some exceptions, there are some indications in which we are doing the FETs। प्लीज ऑल फॉर ऑल होना चाहिए, क्योंकि अगर वो साइकिल जो है उसमें प्रेगनेंसी ना हो सके तो और जो है गुड क्वालिटी एम्ब्रियोस नेक्स्ट साइकिल्स के लिए अवेलेबल हो। वो तो freeze all for all means हर मरीज के लिए irrespective के पेशेंट सबके लिए होना चाहिए ना, किसी का भी साइकिल फेल हो सकता है। नहीं बात नहीं समझे, freeze all हम we are not transferring the fresh cycle, fresh में कुछ नहीं करें, अब चाहे गलत मलत ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन है कि नहीं, पीजीटी करना है कि नहीं, हमने निकाले, हमने फ्रीज करने whether they are grade 2 embryos, grade 3 embryos, freeze all for all, सारे embryos हर पेशेंट हर को एक ही लाठी से मारना है। Freeze only are the indications कि ये indications है जहाँ पे हम fresh डाल सकते हैं और इनमें हम freeze करते हैं, तो I personally believe in freeze only। But keeping in view all the benefits if you have discussed already with the patient, she herself will opt for freeze on, I think, because there are so much benefits on that. बेनिफिट्स तो हैं, लेकिन देखो हम ट्रांसफर करते हैं द फ्रेश साइकिल्स, कितने हम ट्रांसफर करते हैं द फ्रेश साइकिल्स, दोस हु आर नॉर्मल रिस्पोंडर्स टू हाइपरस्टिमुलेशन में नहीं गए, उनके 4-5 एग्स बने हैं, दे हैव नो nausea and vomiting, the lining is so good, patient is feeling healthy, progesterone levels are low,
things are so optimal that I can transfer one end. And patient doesn't have much time to waste कि मैंने जाना है या मैं जिंदगी में और बहुत काम करने हैं अगर सारी चीजें optimal हैं I myself convince the patient to transfer at least one. एक्चुअली मेरे ख्याल से जब ट्रांसफर करते हैं उसमें प्रोजेस्टेरॉन लेवल लो होना चाहिए. उसमें जब आप ट्रांसफर on the day of trigger the progesterone level should be less than 1.5. If it's more than 1.5 it means कि कुछ endometrium की receptivity में मसला आ गया है कोई उनकी synchrony खराब हो गई है कहीं कोई premature elevation of progesterone से कहीं पे synchronization खराब हो गई premature ovulation कहीं हो गई है. हम करवाते हैं on the day of trigger we used to have the progesterone levels it should be less than 1.5 it should be less than fresh और frozen का criteria. तो अगर वो less than 1.5 है तो I'll transfer in the fresh cycle if it's more than 1.5 I do not transfer. जब हम frozen में जाते हैं frozen हम तब जाते हैं कि जब हमने estrogen phase से progesterogenic phase में जाना है फिर आप progesterone levels कराते हो it should be less than 1.5. अगर 1.5 से ज़्यादा इसका मतलब कोई follicle बन के rupture कर गया था तो या जिस दिन मैंने डालना है उस दिन the level should be more than 10 क्योंकि अब मैंने progesterone दिया को 5-6 दिन अब level should be more than 10 if the levels are less than 10 तो luteal phase is not optimal whether I have to increase the dose of my progesterone or just cancel the cycle. एफिनिक साइकिल में लेवल्स 10 तक होने चाहिए On the day of transfer more than 10 ठीक हो गया जी तो मुझे साथ सवाल जो आप कर भी हैं लेकिन अगर फिर if there are any you're most welcome. ये अब सारे सवाल क्योंकि मुझे लगता है साथ से वो इंटरेस्ट बना रहता है तो अगर कोई फिर भी है तो जरूर पूछे you're most welcome और अगर नहीं है तो Thank you so much, Dr. Shazia, for refreshing and increasing the knowledge of our audience regarding frozen embryo transfer. We also have third speaker, but before that, I would like to call our chief guest, Dr. Fariha, as she has to go somewhere else urgently. Please welcome Dr. Fariha Farooq to give your concluding remarks on today's symposium. Assalamualaikum everyone. It has always been a pleasure to come here and actually I started this CME and all this when I was working here. But unfortunately, negative counseling was a bit difficult for me. And hats off to those people who are doing this great job, especially Dr. Shazia, Dr. Safiya Meer, all the team under the patronship of Dr. Sajjad. And I'm really happy to see this new setup. And I congratulate Dr. Sajjad on this silver jubilee of 25 years of this Australian concept setup. Now, but I'm still referring patients to this excellent center, especially Dr. Shazia and her team. And I have full confidence in this. And recently we have made a state-of-the-art tertiary care hospital in DHA. And a lot of renowned gynecologists, they are sitting there. And they ask me that when did you make an infertility center? I said कि जो बने हुए हैं उनको अच्छा काम करने के लिए आप वहाँ रेफर करें. So I always tell my co-gynecologists to refer the patients to Australian concept, and inshallah I will make it a proper organized way. Regarding the talk of today's topics by Dr. Safiya Meer and Dr. Shazia, it was very enlightening, and I must say that a lot of new things I've learned over here. The role of letrozole, there are so many new benefits and new regimes which I was not even aware of. And I think we should all switch over to letrozole, especially those patients who can afford this, as there are more chances of 90% ovulation rate, and there are more chances of implantation because there is less more endometrial receptivity and thickness is there. Regarding the use of letrozole in endometriosis, I just want to say this my personal experience. When in those patients who have multiple surgeries for endometriosis because they have frozen pelvises, when you give letrozole along with progesterone and calcium and some anti-inflammatory, it has magical effect on their endometriosis. Their symptoms are relieved within the first month of the use, and if you continue them for 6 months, most of the small cysts and adhesions, patient will get benefit of it. One of my patients is off and on this treatment for the last 20 years, and she had such bad
pelvics, all frozen pelvis, and still she is, quite compatible with it. Regarding the second lecture by Professor Shazia, I'm very much impressed by the latest frozen embryo techniques, and I'm sure this is the future. And the patients, many patients, they also come to me and they say that almost every patient which is coming, patients are so well aware of this technique कि वो खुद ही कहती है जी मैं वहाँ गई मेरे इतने एम्ब्रियोज अभी पड़े हैं वहाँ पे और सही हैं. So I think we should also encourage the patient, and we should adopt this technique of frozen embryo for more, success rate and more effective treatment of this IVF, because it's so expensive. If we do all the embryos in one cycle, it's cost effective as well, and it is also very. Otherwise, the success rate is low. So I think we should adopt this technique in future. Thank you very much for inviting me here, and thank for especially for me who's been out of touch with IVF for quite a few years, and it's really beneficial. Thank you so much. I would like to call Dr. Sajjad on stage to present field to our chief guest, Dr. Farina. May Allah bless you with long life and I would like to call Dr. Fariha for distributing sheets among our speakers. First of all, I would like to call Dr. Shazia Ashraf to come. Now I would like to call Dr. Safia Munir. Please come on stage. मैं सामने देखी बनाना क्या उनकी बर्थडे भी है. मैं तो सामने देखी मुझे फेसबुक से पता चला. Okay. Thank you so much. Thank you so much. now. Enough. Hello. As we know, in the whole process of IVF, monitoring via blood test and especially follicular tracking through TBS is of great importance. So our third speaker, Dr. Maida Iqbal, will briefly explain regarding follicular tracking through TBS. Please welcome Dr. Maida Iqbal. वो रोटेटेड डिवाइस का क्या है?
और एक्यूरेट होता है और ये फास्ट होता है। ये इमेज में आप देख सकते हैं हमारा ट्रांसड्यूसर और सर्विक्स यूट्रस ओवरी ये हमारा अल्ट्रासाउंड। Follicular metering क्या है? It's a vital component of IVF, IUI assessment and timing. It is a simple technique of assessing ovarian follicles on regular intervals and documenting the pathway of ovulation. This is our preparation. उसके प्रोटोकॉल्स क्या है? हम डे 3 और 4 बेसलाइन स्कैन से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद सीरियल फॉलिकुलर मीटिंग जो है वो होती है। उसके बाद वाई टू मॉनिटर हमें ये फॉलिकल्स जो हमने स्टिमुलेट किए हैं ये नेचुरल साइकिल के हैं, ओव्यूलेशन इन्वर्जन to validate if the dose is optimal, to adjust the dose of the patient with which patient hypersensitivity and to find optimal time for ovulation induction, to time IUI and to prevent ovarian hypersensitivity. और फिजियोलॉजी है ये ओवुलेशन का जो प्रोसेस है। Early ovulation begun during late critical phase of prior menstrual cycle, then certain 2 to 5 mm sized healthy follicles form a population from which dominant follicle is to be selected for the next cycle, and this process is called inducement. Usual number of such follicles may be 3 to 11. These 3 to 11 are our central follicular count, which may go on decreasing with advancing age. During day 1 to 5 of the menstrual cycle, a second process of follicular selection begins when, among all recruited follicles, certain growing follicles of size 5 to 10 mm are selected, while rest of the follicles are replaced or become attractive. During 5 to 7 day of menstrual cycle, a process of dominance begins when a certain follicle of 10 mm size takes the control and becomes dominant. This also suppresses the growth of the rest of selected follicles and in a way is destined to ovulate. The follicles start growing at the rate of 2 to 3 mm and reaches maximum 70 to 27 mm size just prior to ovulation. And the next important point is if we see any follicle on day 2 or 3 of the cycle, this may or may not be a dominant follicle. Dominant follicle वही होगा जो हमारे cycle के end पर जो mid cycle में हमें reproductive के दौरान नजर आएगा. Process of dominance begins late when suddenly a certain undergoing follicle start growing faster or become dominant or suppress others. Almost nearing ovulation, rapid follicle growth takes place and follicles start protruding from the ovarian cortex, attains a spinatic border and literally explodes to release the ovum along with some fluid. इसके बाद अल्ट्रासाउंड फॉलिकुलर मीटिंग है. सीरियस इज द प्रेफर्ड मोडालिटी और हम सीरियल फॉलिकुलर मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं डे 7, 8 और 9 ऑफ द साइकिल. Ultrasound meeting may begin on day 3 of the cycle to assess baseline size as well as exclude if any cyst remains from previous hyperstimulation or otherwise. Or 18 to 20 mm has been found the size of follicle which may contain ridge or oocyte. Also, we should comment on follicular shape, echogenicity or the antral edges. Sonographic signs हैं कि जब ovulation है तो हमें क्या अल्ट्रासाउंड पे फाइंडिंग्स नजर आई. Follicle suddenly disappears with decreasing size, irregular margins होंगे, intrafollicular echoes होंगी, including purity और follicular blood flow जो है वो increase होगा अगर हम लोग करेंगे. After menstruation ऐसी नजर आएगी, follicles जो छोटे होंगे 5 to 10 mm जब साइज पे जाएंगे, फिर menstruation mid cycle पे और after rupture के बाद इसके लिए सारे मॉडल्स irregular होंगे हैं जो हमें हमारे typical ultrasound finding है और operated circle of fire appearance. During जब ovulation हमारी start होगी day 13, 14 जो अपनी patient पे depend करता है. और follicular Doppler flow, which what follicle contains vascularity in at least 3/4 of follicular circumference.
इस टाइम पे एलएच स्टार्ट होता है और ये टेस्ट टाइम कहीं हम अल्ट्रासाउंड का ये रोल है कि हम इसके थ्रू गायनेकोलॉजिस्ट को बता सकते हैं कि ये आप फिगर कब देखना और ये लास्ट में वो है अल्ट्रासाउंड इमेज जिसमें ये डे 14 का एक स्कैन है जिसमें 23 mm का डोमिनेंट पॉलीजन है और ये उसकी ओव्यूलेशन के साइन है वो उसका साइज कम हो गया श्रिंक हो गया और इरेगुलर बॉर्डर थैंक यू rotating follicle पड़ा हुआ है हमें कैसे पता चलेगा this is a rotating follicle or this is the new follicle of that cell वो तो हम बेस लाइन में देखेंगे ना डे 2 और 3 पे और से अब हमने इसकी साइकिल शुरू करनी है डे 2 पे डे 3 की बात कर उनकी रेगुलर साइकिल्स हैं उनका कोई फॉलिकल पड़ा हुआ है हमें कैसे पता चलेगा कि की साइकिल है कि ये अब जो है कि किस साइकिल का बना वो हम पिछले सीरियल अपने जो हमारे स्कैन हो रहे होते हैं ना उसके साथ उसको जो है ना वो रिलेट करते हैं उसका साइज बढ़ता जाता है वो पहले से जो है अगर हमने डे 2 की रिपोर्ट में या उससे पहले मेंशन किया हुआ है वहाँ पे मौजूद था जो अभी में था उसके बाद जब ये पोस्ट में आएगा तो वो हमें पता लगता है कि ये पहले से चल रहा है जो कि अगर स्टिमुलेशन देने के बाद वो भी इंक्रीज होता रहता है साइज और अगर वो रिग्रेस कर जाता है तो वो वहाँ से खत्म भी हो जाता है वो तो हमें डे 3 भी पता लगेगा उसके अलावा हम नहीं बता सकते ये पॉलिटिकल रिटेन है यानी कि पेशेंट को आपने सिचुएशन लेके भेजा है ना और लेके तो हम नहीं बता सकते तो डे 2 और 3 अगर पहले से हमने देखा तो नहीं बता सकते उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं स्पेसिफिकली नहीं है कि हम अल्ट्रासाउंड पे देखेंगे ये हमारा डिटेल जब वो दोबारा स्लाइड दिखा रहे हैं ये फॉलिकल मैच्योर हो गया है और अब इसमें ये नहीं इससे पीछे ये वाली